Hey guys, welcome. I just quickly open the chat on my laptop. Give me a sec, guys. I know it's very early. I know a lot of you are not going to be here, but I just had to do this because I have been wanting to do this for a while now. And for 2 days, I haven't had the time. Hydrate water, I say, man. For 2 days, I haven't had the time, and I just wanted to do it to get it out of the way. Uh, कर ले रहा हूँ हाइड्रेट भाई अच्छा डिहाइड्रेट रख लीजिए मुझे होपफुली क्या बात है वेलकम मून भाई वेलकम कैसे हो गॉड आई एम गुड मून भाई हाय वेदांत तुम कैसे हो क्या चल रहा है मून भाई we'll chat for like a minute or two and then we'll start with this because I don't want to be wasting your time as well. We'll get done with the analysis. We'll focus more on analysis now onwards, especially on these streams. There'll be just chatting streams, and that will also happen, but these streams will mostly be analysis. This is better for you guys. Sub changa se nice one. So today, for people who do not know, we'll be कट रही थी जिंदगी बस कट ही रही है जब जरा बता दो कि सर कौन जीता कॉज मैं अभी एक भी मैचेस नहीं देख पाता तो क्रू जीती ये मैप लेवायथन जीती 14-12 से बट ओवरऑल ये जो ग्रैंड फाइनल्स था वेदांत दे क्रू वन दिस ग्रैंड फाइनल्स एंड क्रू हैव क्वालिफाइड इंक्रीज माइक वॉल्यूम मेरा माइक वॉल्यूम ठीक नहीं है क्या वेट आई चेक हाय वोटेक्स guys, is my mic volume low? It's fine. It's okay. I'll just. I hope it's fine now. मैंने 1 डेसिबल बढ़ा दिया. मैंने 1 डेसिबल गेन को बढ़ा दिया. बराबर है आवाज. ओके. I'm fine. Vortex क्या हाल चल रहा है बताओ. तुम बताओ. I don't know. It feels different. Yeah. So I'll tell you why it feels different. I had to format my windows, और उसके वजह से this will feel a bit different. Yeah. तो मैंने अभी तक सेटिंग वेटिंग नहीं की है. अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड. कैसे चल रहे हैं रमजान रमजान करीम. हमारे तो रमजान चालू हो गए. हेयर कट बोलते हेयर कट तो है भाई. 30 मिनट पहले आ गए शीश. क्या 1 बजे का डाला था क्या मैंने 1 बजे का डाला था क्या. मेरे को लगा मैंने 12:30 का डाला है. मैंने 1 का डाला था क्या. अरे यार चलो कोई बात नहीं. हाय स्वराज. लोग आ जाएंगे धीरे धीरे. कोई बात नहीं. So we'll start. Pero a medida que la serie se alarga, me entenderán los que han metido alguna sesión larga. अच्छा इसके लिए ये भी करना पड़ेगा. तब तक हम जुगाड़ कर लेते हैं. बिग बैंग ये सब डाउनलोड करके रखते हैं.
भाई भाई सॉरी गाइस, पहले आने के लिए आई थॉट कि मैंने 12:30 का रखा है। This is taken since yes finally. अरे 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 epic pen is here guys. Come on guys. de Valorant alguna vez, que la concentración empieza a Pongo complicarse पता y नहीं la किसके estamina बारे में empieza a बताऊंगा। prevalecer en muchas instancias. ¡Qué arranca la acción! इन्होंने UI पूरी हटा के दिया भाई। Todos, ¿no? El mapa es igual de relevante que tu habilidad para jugar el juego, es tu habilidad para jugar el mapa como tal. Pero creo que Ascent fue de los de más rápida aceptación. Se चालू हो convirtió रहा muy है। You see rápidamente the setup, en डिफेंस साइड का क्रू है डिफेंस में, ओके। You see the setup, किलजॉय ने एग्रेसिव टर्रेट लगाया है भाई, और favoritos कचरा दिख sobre रही todo है, de la región del sur, debo decir, creo que el jugador ठीक है। de इनका Valorant en सेटअप general, बहुत ही बेसिक दिख रहा है। y que no estuvimos viendo tanto किलजॉय últimamente, ने me अलार्म बॉट parece, मिड ¿no? पे Así लगाया que है। me gusta darle una final, me ओमन gusta यहाँ darle पे el tercer एमिन में mapa. आई थिंक सो वन वे Tercer करने mapa के que लिए digo, तैयार entre बैठा los है। breaks que hubo un Along poquito with más. KO, what the fuck UI का है? हाँ UI is absent, I don't know why. Let's just see, I think so आगे जाके UI आ जाएगी। Alargados, yo creo que es un mapa que los 10 jugadores todavía lo juegan al 100%. भाई रडार तो दिखा दे, La medida UI que नहीं la दिखा serie रहा। se हेलो alarga, me guys, entenderán los que han can you tenido at least alguna show us the sesión larga de radar? Valorant alguna vez, que la concentración empieza a So, complicar. it's okay guys, so basically defense में 2-1-2 का setup है, okay? Omen and KO are playing together. Jet I think so is going for an early mid peak, और यहाँ पे KJ is playing with Sova. On the attack side, it's mostly Omen playing towards A main, and there are 3 players. It's a 3-2 setup for the attack side. They are likely to target A main control and mid control. जिस तरफ से दिख रहा है because they are in the courtyard. ठीक है? Let's start. Y ahí la estamina empieza a prevalecer en muchas instancias. ¡Qué Early shock dart. arranca la acción! Okay. यहाँ पे हाँ, पर इसका मतलब नहीं समझ में आया सेटअप का। अग्रेसिव सेटअप है, टर्रेट तो डाउन हो जाएगा, और फिर यहाँ पे एग्जैक्ट पे ऑन Se करना rompe la paridad cruda de नहीं है। केओ ने यहाँ पे 2 जन को स्पॉट कर लिया है एमिन पे, अब defensa. देर Leviatan al ataque. वो लोग थोड़ा पीछे आ गए हैं। Y nos vamos con todo porque el Okay. portador del spike ya se va para pasarela केओ donde नाउ el Deus गार्डिंग बहुत ही ऑफ एंगल है, you can get at least one good kill. de los brazos abiertos para recibir con bala fría Misses, cualquiera de los que se nice. busquen. And Omen flashed उसी समय पे. Okay, so this was going to be an A split, a fast A split. Mid control उन्होंने नहीं लिया because I think so यहाँ पे AP Meter spot हो गया. directamente a la zona. Naxet se lleva su espejo. Quedaba detectado en el 5 para 4 y los números han terminado por desbalancearse. El rey se avienta. See ये जो position था ना, En el 5 de los que se busquen meter they got plastered here because दोनों एक जगह पे आ गए. directamente a la And zona. when they Naxet se lleva group su together in a situation like this, plus the one guy is spotted, right? espejo. Quedaba detectado. So Omen को passive damage ऐसे ही पड़ जाएगा because of this guy, because people are going to target Kesnet, और उसके वजह से बेचारा डेल्सिक को डैमेज पड़ेगा यहाँ पे. En el 5 para 4 y los números han terminado por desbalancearse. El rey se avienta. Se lanza por generador. He still takes one down. I don't think that was feasible, but he still took one down. It's a good, it's a fast A split. It's a good A split. It's still a 3v3 though. Second shock dart use करते हुए बहुत shock darts नहीं है. Immediate बहुत ही fast retake करने की कोशिश. Nice. So basically, I tell you the positives of this. The positives of this, I'd say, defense के लिए was definitely, defense के लिए was definitely शुरुआत में KO का पोजीशन और उसका नाइफ. KO ने यहाँ पे जो नाइफ किया और ये जो पोजीशन लेके रखा था ये एंगल में, दिस इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव उसके लिए. नेगेटिव्स पे अगर ध्यान दें डिफेंस का, तो KO जो यहाँ पे आता है उसकी वजह से उसका ओमेन बिट हो जाता है. ही स्टिल टेक्स वन डाउन. ओमेन +1, क्योंकि वो जो लेके गया है वो इट वाज नॉट फीजिबल. उस सिचुएशन में इट्स वेरी अनलाइकली दैट यू टेक वन डाउन जिस तरीके से.
तो नेगेटिव तुमको पता चल गया कि वो का जो पोजीशन था बैक साइड बैक जिम, ठीक है, बैक जिम। पॉजिटिव्स क्या है डिफेंस के, और फास्ट रीटेक, ठीक है, फास्ट रीटेक, बहुत ही फास्ट रीटेक, बहुत ही फास्ट रीटेक। ये डिफेंस का तुम्हारा पॉजिटिव्स हो गए। हमने जो भी देखा यहाँ पे बेसिक एकदम। सीए के साथ आज कितने बजे आओगे लाइव? आई थिंक सो सीए का स्ट्रीम 5 या 6 बजे है गाइस, रोस्टर चेंजेस वाला, तब हम लाइव जाएंगे। ये हो गया। अब हम डिफेंस का देख लिए, अटैक का क्या है पॉजिटिव्स, पिकम्स क्या है मास्टर्स के, वो उसका अलग स्ट्रीम करूंगा मैं, समझ शो यू। there'll be a separate stream discussing masters और उसका सब कुछ। I think so it will hopefully be tomorrow evening, 7 o'clock or something, but yeah, we'll do it. Okay, ये हो गया। अटैक का देखो पॉजिटिव्स क्या है। पहला बात तो उनका टेम्पो, ठीक है, आई थिंक सो द टेम्पो वाज वेरी गुड। इट कुड कैच प्लेयर्स ऑफ गार्ड, है ना, टेम्पो पॉजिटिव, ठीक है, कुड कैच प्लेयर्स ऑफ गार्ड, नहीं पकड़ा यहाँ पे केओ ने पहला बात तो शॉट मिस किया, नहीं तो हो जाता, मतलब ऑलरेडी डाउन हो जाता, बिकॉज इस केओ की पोजीशनिंग बहुत अच्छी थी डिफेंस की, बट स्टिल उसके बाद जिस तरीके से मैनेज करते हैं। नेगेटिव क्या है कि उनका मतलब प्लांट करने का हक बड़ी जो था, उनको प्लान करने की इतनी जल्दी थी ही नहीं। इफ यू सी केयरफुली, they still had 1 minute 11 seconds left. They could have waited, they could have baited, they could have baited out with some fake plants, बहुत कुछ कर सकते थे। 1 minute 11 seconds, especially when they're hearing the noise, right? Like when they can hear footsteps on heaven इतना clearly, shouldn't go for the plant back then. Pero no termina con nadie, el manto oscuro le permite avanzar, Massino se quiere llevar a su VCT कब से है guys? आने ही वाला है। espejo y lo van a correr a patadas, que se lanzaba directamente a la cara. Massino, Inaxet. 10th April से है, यहाँ तक मुझे पता है। Terminarán esta pistol de It was a forma good fast exitosa. retake. Desactivación en curso. Primer punto para la escuadra de Crew. Si es, Crew defiende el sitio, pero atento, porque But defense के rotation बहुत अच्छे थे. And Leviatan were a bit impatient in going for the plant here y ya amenazaban con el to round forzado, it off. así que consiguiendo 3 bajas y I think they have the plant. Do they buy? colocando el spike, hay que ver si la escuadra... No, खा रहा है. ya una frenzy, una ghost, parece que no van a forzar. Estaban las posibilidades. Interestingly, Naxet has gone for the buy, so he's not saving for the op. He's going for the Bulldogs. This is something I've noticed quite a while in the last month. Now there has been a shift from Jets going for that op save and prioritizing the second round and the third round more rather. With the Bulldog, Spectre, कुछ भी ले सकते हो. Sometimes even a Vandal if your first round goes that well. They invest heavily into the second round and third round rather than saving for the op. ये मैंने बहुत देखा है आजकल के current meta में. Era una de las chances, pero la van a jugar más safe. La serie está 1-1, no están contra las cuerdas bajo ninguna circunstancia los chicos de Leviatán, así que la van a jugar. From the looks of it, almost setup ये इनका default है लगता है crew का. जहाँ पे केजे और सोवा साथ में खेल रहे हैं. I feel like KJ Sova is a good pairing. Jet mid में है, so she can rotate either ways and she can take fights. उसके पास high crossfire, उसके पास disengaging option भी है, so it's overall good that Jet is taking an active fight उधर. Jet active रहना बहुत ज़रूरी है. Sometimes like she can either group up with the pairing at B or the pairing at A. Very default setup. They're doing nothing special. और जहाँ तक इनकी बात है, again looks like a 3-2 setup, but this time 3 जन aim इनके बाहर है. KJ looks like he'll deploy an aggressive turret towards B main, और Omen is maybe watching out for this. शुरुआत में mid smoke करके he'll watch out for a push or something. Remains to be seen. So short smoke किया. Por previa de A quedaba revelado con ese dardo de parte del Soba. अब इनको पता चल गया कि Omen यहाँ पे खेल रहा है.
A eso vinieron, sacar So la orbe y detected se tiran again. para atrás nomás. Qué bueno, porque desde que estamos teniendo excelentes rondas de ese. This is good, even though they do take a casualty. जो कि I think so was. Oh hey man, damn late I'm what. Hi, Omnis, congratulations on your 1K followers, man. Congratulations on your congratulations on your 1K followers. I woke up and saw your tweet about finally gotten 1K. You deserve it. I mean, the way you've been pumping out stats and everything, all that hard work. Estilo, vais terminando. Even though यहाँ पे they thanks man, all good. Yeah man. I think for you it must be like 3:30 or 2:30 in your area. No, 3:30 or 4 something, right? Pero Masino correspondía a tiempo. So now they immediately fall back because they've taken a scalp. They know Sova is here. They have more information about what is the hello Godspeed. कौन जीता BO5? Crew ने जीता है BO5, but ये map Leviathan नहीं जीता. More to come for Masters. I know for sure. Omnis. Es muy importante, ¿eh? Mira el posicionamiento que tiene Melzer en esto. They're just resetting, which is very good. Okay, this is good from Leviathan. It is always good to reset after you get a kill यहाँ पे, because even though it's a 4v4, I told you relative advantage कैसे देखते हैं और absolute advantage कैसे देखते हैं, है ना? So absolute advantage के हिसाब से तो अभी भी it's crew is in the driving seat for this round. But if you talk about relative advantage, they've expended their Killjoy, who had a frenzy, and they've demolished the entire B का जो defensive setup होता है of Killjoy, उनके opponent का Killjoy का, and the Spectre that she had, Claws had. तब तक crew में crew has massive firepower. Yeah, crew absolutely has massive firepower. It's just that their defensive setups are very basic, and which allows them, to focus more on their chemistry and aggression. और they're very dumbed down भी बोल सकते हो तुम उसको basic को. Estos momentos podría llegar a agarrar alguno, ¿no? Algún coqueto, ¿no? See, now they've cut off every information from the defensive half. अब defensive side को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा to gain information. I think they're just waiting for Sova maybe to get some engagement, या तो use उसका recon वापस आया तो use recon, or they're waiting for KO's knife to somehow scour some area so they get some information, because अभी सब कुछ off कर दिया. They've cut off footstep because यहाँ पे उनको इतनी दूर सुनाई नहीं देंगे. Omen is just holding, but in Masters 3 crew बहुत अच्छा खेली. I guess they anti-strat more than making strats. Maybe man, or maybe they just didn't want to show strats here. Maybe Ascent is not that great of a map. For anything can be true, right? ¿No? Quiera lanzarse para zona central, que quiera comer por fortuna. See, this is what they have to do. This is what Leviathan are making them do by cutting off all audio, all presence, and every bit of information. Now Sova has to push for information. कोई एक जगह से तो कुछ करना ही पड़ेगा, and that is what leads Sova to push. So this is a dangerous proposition for Crew won this match, right? Crew won the BO5, but Leviathan won this match. Las intenciones del Deus se han cancelado y Masino puede encontrar un See, contacto. Sova spots, but this is very good from Sova. He doesn't commit to a fight. He just spots, and now he's fallen back. He's given the information that was required. He spotted multiple people, and now see, immediate backup comes in the form of the Omen smoke. You have Jet lined up here as well. So now that B defense is stronger, even though their KJ is dead. En la cochina, esperando por supuesto. Man. Yeah, man. Dude, but this NIP team, I saw the match. Like, I was pleasantly surprised by how dominant they were against Leviathan. Don't get how still Ascent do after winning Masters. They decided to bench Gold. Yeah, Aditya, I mean, decisions are decisions. We don't know the inner workings of the team. We can just, let's say, we can just psychologically evaluate what has happened based on whatever we see here and whatever we see on the map, right?
That is the best we can do. We don't know communication. We don't know the inner workings. Vedant, they were lucky. Maybe yeah, they did ride their luck, but in the end, they made good on their luck. Hi, Mimosa. Kyle's is also bench. They're bringing in that guy, na? His name starts from D. Arey, Deep Man. They're bringing Deep Man, right? क्या हाल है Mimosa? Good afternoon. An early stream play. So again, guys, apologies. I think so. I had given the time यहाँ पे 1 बजे का and I mistakenly I started at 12:30. I thought कि 12:30 का start होने वाला है. आज अर्ली स्ट्रीम का भी. Hi परिचय. Hi Lord Brain. या वो मेरी गलती है. My fault. I gave the timer at 1 o'clock. Fnatic का बहुत गंदा हुआ. Sad Brave AF. You could say that. I don't think Brave AF deserved that in my opinion, because his opinion जो उसने दिया था was ill informed 24th February को. After that बहुत सारी information has come to light and he himself admits that उस समय उसको नहीं पता था. पेन बोल लो यार अब तो. When does G play? Yes, Malav, welcome. Good afternoon, Malav. Hi, Manas. Welcome to the channel. We'll just quickly finish this round, guys. See, now they're rotating because they know the smoke. अब ये smoke का shot हो गया. They know कि backup आ गया होगा normally. And look at the position that this Omen has generated. उसको यहाँ पे बहुत अच्छा position मिल चुका है. So they are mostly trying either to move towards A ताकि जो B का rotation हो, B से A का, तो Omen इसको catch कर ले, या दूसरी जगह if this KO dies, this KO is on a solo hunt. If this KO dies, then they, I think so, go mid to B. Check to sub है. कल PUBG मैच का order prepare पक्का मानस. Yeah, LATAM number 2 got clapped by. They were very dominant, surprisingly very dominant. I didn't expect. All three of them are going towards A short. Nice. No, even though they failed this round, there were many positives for Leviatan. And I'll tell you how. What are the positives that I saw? First of all, the major positive I saw is the ability to reset. After the 2 kg die, the ability to reset was very good. Then forcing the forcing defenders on the offensive, cutting off all information basically. They force them to move in an offensive way. On any other day, maybe if Sova overstepped here, वो इन 3 जन से मर जाता 1v3 से. राम राम. हाय गुस्ताव. सब आ गए. So very good वहाँ तक. I think so. तीसरा जो rotation का call था B से, that was also good because Omen ने यहाँ पे position ना ली थी. But what I feel is once the KO dies here, I think they should have gone mid. तो वो एक negative point है. I think वहाँ पे decision making थोड़ी सी गलत हो गई because Omen has already captured a great amount of area and they should utilize that area. हालांकि when they already know कि इधर KO मर चुका है, and KO obviously with such little time left, he'll obviously relay the information that उसने यहाँ पे KO को मारा. There might be more people there. और डिफेंस की तरफ से पॉजिटिव मैं बोलूँगा सोवा वाज अ मैसिव पॉजिटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल ही traded the KJ kill, जिसके अगर वो नहीं होता तो it would be a very big deficit early on in the round. और उसके बाद when he went for information play, that was also good. Hi गुरतेज, क्या हाल है गुरतेज? Linda jugada de Kesney. So, ¿Qué pasó ahí? I say massive positives to see. Where is G2? Ojalá que sí. ये क्या है? Los Fangle. Where is G2? G2 की जगह पे, मतलब यहाँ पे क्यों होगी?
LATAM है ना ये आदित्य? Okay, let's look at the setup. Still continuing with the default setup, है ना? Look at the buy. Crew are very much playing the bonus. Naxet, Telzik, they have तुम्हारा Spectre ये सब. I think Mazino has dropped his Spectre and is forcing on a USP. Ghost, USP बोलते था. So all in all, see, look at their average money. Claus is the only one that has bought a Spectre. I got understand about brackets of monsters. Oh, my bad. बाद में बात करेंगे उसके बारे में आदित्य. So Claus is the only one that has bought into this round, and he's bought a Spectre. If you remember the winning, like, so basically Claus will be the only one devoid of a buy if they lose this round, of a full buy if Crew loses, because other people have enough. 1800 अगर मिलता है 1800 they get. And if they lose, everyone can buy except Claus, who will still be able to buy, but probably not a full buy. He'll probably again have to go on a Spectre to reserve all his utility. I think the picture will change the economy. The third round is very weird. I don't think the economy needs changing. I think it's perfect as it is. I think the bonus is a risk that you take. You can choose not to be on a bonus. That is your prerogative. People are on the bonus because I'll tell you, pistol round जीतने के बाद क्या होता है? You automatically think if you go on a bonus, and if you take one or two people through, around two people down on the third round, the fourth round becomes easier for them. So ideally, a team, when they are winning a pistol, they immediately think of a scoreline. An ideal scoreline is 3-1. Obviously, the maximum scoreline is 4-0, because if you win the third round, which is a full buy for the opposition, you go on to an anti-eco round on the fourth round. But overall, I'd say 3-1 is what you're aiming for ideally when you win the pistol round immediately. And वो 3-1 होने के लिए the third round में अगर तुम invest करते हो हाँ बहुत ज़्यादा, if you go for heavy investment on the third round and you lose out on the third round, right, then on the fourth round you are forced on an eco, so it becomes a 2-2, and 2-2 होने से जो पिस्टल राउंड का जो एडवांटेज है वो तुम खो देते हो दुदेरिया. सो पिस्टल राउंड का जो इनहेरेंट एडवांटेज है दैट इज लॉस्ट इफ यू इन्वेस्ट हेविली on the third round and lose on the third round for the side that wins the pistol round, which is why they go for a more of a bonus system, so they maximize their chances of making it a 3-1 rather than a 2-2, if I can put it across in a very concise manner. Okay, the aim for the pistol round winner is to have a 3-1 lead. To maximize the chances of a 3-1 lead, they don't force on the third round. They play on the bonus so that they maximize the chances of winning the fourth round. I hope this is good. Can't say I disagree. हाँ मतलब I'm just telling you कि नहीं तो फिर pistol round का कोई advantage नहीं रहा ना तो तेरे. Like if you lose the third round, entonces hi Tanesh. El segundo prácticamente gratis porque tenían la mira calzada en el sector de jardín y no. The attackers again playing very backwards. बहुत पीछे. Cuidado con esta Same ronda que es compra contra bonus. Ventaja para spots Leviatan, Jet, I feel, right? En términos de armas, pero Sova doesn't spot anyone on mid, so he'll say कि mid अभी तक clear है. They don't spot anyone at A. They are very aggressive at A. Omen keeps smoking A shot, but Sova already has information that there is no one mid, so they can afford to do this. A este nivel de juego forzados a presionar. They spent a lot of utility porque las orbes están trying to isolate. अभी उनको ये नहीं पता है कि Windry में कोई है या नहीं. So it will be interesting to see how they clear out Windry, if they want to do it at all. So they fall back, but they're re-aggressing at the same time. Okay. Esa economía de definitivas y capitalizar alrededor de eso. Another flash. So they've exhausted all resources. They've exhausted everything except one flash for King. Cuando uno está del lado atacante. Por ahora, control del carril central. Attackers are slowly going for another A split. Yes. But look at the rotation. See, because of Killjoy's aggressive position here, Sova can now afford to go move towards A, because see,
KJ being here, पहला बात तो gives the inclination कि इधर कोई नहीं है, और कोई आएगा तो footsteps या contact मिलेगा. दूसरा, his alarm bot is still activated, तो उनको पता है mid भी कोई नहीं है. So Sova can, like, they can heavily invest 4 players towards it. So again, crew has an inherent advantage here due to the information they've gained through KJ का position. Y todo indicaría que va a ser un 2-2 Lurker o un 3-2 para el sitio de A. Se viene la acción por Amaranta, que Cuidado, Naxxet lo tiene de frente, la presencia de él sí que es muy importante. Veremos si lo eliminan. Hace su trabajo y se lleva a Melzer, rompiendo completamente el arranque. Mira Masino por espalda. ¿Dónde va? Está peinado. Se lleva su Very good vida y timing eso, play. la eliminación es clave. Dwarso knows that there is someone in Winery, but cannot catch him in time, and Kesney takes him down. El robot ha caído. Cuidado, Baisky ya se colaba. 5 balas en el cargador, 10 segundos. Esto se va a terminar porque See, Masino... the Leviathan lost this round purely because of information and control. Leviathan basically gave them the illusion that they have mid control because they kept smoking this area, right? Kept smoking this area, they gave the illusion, but Sova with his recon found out that no one is aggressive towards me, right? And Jet was also marking this area, so they know that no one was mid. KJ came here, so they now know that no one is towards B, or there is no contact play. A contact play hoga, then they can rotate. Mid pe his alarm bot is still active, so Jet fell back and came A. A pe meanwhile they are very aggressive. KO Sara utility यहाँ पे use करके keeps one flash and goes towards A shot once again. I think this KO is supposed to be stationed towards A shot with the way he's playing every round. Early round he may help Omen a bit, but then he moves back to his position towards A shot, and he's committing fully towards A shot. So they're playing isolated angles. Omen on the other hand वहाँ पे बहुत अच्छे से stationed है. He knows कि यहाँ पे उसको fight लेना पड़ेगा और वो information यहाँ पे gather करके देगा again. And with KJ coming here, they now have 3 people at A. Sova can also now rotate, so they now have 4 people, so they can have backup for A shot and for A mains. They can have one player here, so they can watch the crossing, and उसके contact पे Omen can play. और दूसरा A shot पे तो normal है. So Leviathan lost control, gave up so much control of the map and focused on just A shot. They didn't even focus on Amen because their early they didn't retake Amen to the full extent that they wanted to. If they would have taken Amen back उस समय Omen और KO से, then the A split makes more sense. But here they're committing fully towards A shot, one derivative angle, और उसके वजह से they've completely been read. So good job from crew. अब उसके वजह से इसी Leviathan will be on an eco, so 4-0 यहीं पे हो जाएगा. Leviathan timeout, very good timeout though, I would say, because this was like, this is an indication that crew is able to read everything they're doing. Even in the first round, they wanted to do a fast tempo. They wanted to catch them off guard. They were unable to. And from the first round, it seems that crew has Leviathan's number. So this is a very good early timeout to reset things and talk about how they want to approach the 9 rounds that are left. Uno rojo, juegan, eso indica que cada quien lleva un mapa en esta serie al mejor de 5. El que pierde juega contra Brasil, contra NIP, el 1 de abril, el que gana. Yeah, they're going for a fast A execute, I guess. But Recon spots everyone. Very interesting how they... Oh. See, even though they had Onur coaching them, yes, Alan, welcome. So even though they knew dono defenders ka position, right? Once the smoke goes in, they have like very few chances. Hi Magnus. There are very few chances of entering the site properly,
because ये जो fog of war आ गया, अब इसके वजह से क्या होगा, they don't have an exact position जहाँ पे वो रहेंगे अब, and they can have a lot of freedom with, let's say, isolating the opponents that are coming in, which is what happens. Sitio. But the first kill by Kesnet is very important because it disrupts La their flow. propuesta rápida, la búsqueda de romper un poco el ritmo y sobre todo sorprender al rival ha quedado nulificada. El drone búho lo va And I am not a fan of using the drone here. When it's a 5v1, the drone costs a lot. I think you carry it over to the next round instead of using it here. Because you knew they were on an eco, you have no need to push for the initiative and spend 300 extra credits when you can get the kill anyways on a 5v1 scenario. a detectar, se va a enterar de su presencia y el Deus obtiene la When you're winning baja. a 6 p.m, you know, yeah. 4-0 que se convierte en una ronda fina. Esperemos esa pausa le sirva. The one thing I disliked about Cruz performed display here in the fourth round was their use of the drone, I'd say. Very basic stuff, but I guess 5v1 may you don't need to overutilize your utilities, and you need to maximize your efficiency of using your abilities. You wasted $300. Sirva a continuación porque sí, los números arrancan y hacen test de esos mapas traicioneros que se va demasiado rápido. Abre, cierra los ojos y ya tienes 8 rondas en sí. Sí, me interesa mucho qué haga Leviatan en esta ronda. Si decide jugarla lenta, Bueno. si mete un cambio de ritmo. Por ahora planteo default, Por ahora van a They're jugar back to playing the 3-2 again. libro de texto, segundos para ver. I have no Probablemente uno contra clue why they're positioning with the 3-2. They should clearly take more mid control, which is evidenced by how they're smoking off a shot. They want to, like, they're giving the illusion of mid control. Why not just take mid control? ¿Qué definitivas hay cerca? Está muy cerca la de Vice. Me parece They are still playing the same que van a default. trabajar alrededor de eso, ¿no? Agarrar la orbe de B. This does not bode well. This is not a good representation. Hyper chances and masters can serve have the same impact as Sparky online. I don't think so, Magnus. But I'd say Paper X are destined to do well. Paper X are destined to do well in masters, especially with EU so weekend. I'd say NA versus Paper X is a good matchup for Paper X. Yeah. I think Paper X can do some serious damage online at Iceland this Masters. Y buscar alguna iniciación con la contención de parte de Vice. Ya lo vimos mucho en Haven. This is although not a good representation of LATAM here, because if Crew is playing like this, then I believe they'll be very weakened compared to the other teams from what I've seen from other teams. Either they are hiding how they want to play, and if that is the case, then still winning despite all of this. Hi bye. Hi bye, Freak Boy. Well, it's going to be problematic for Crew to replicate their performance from last season. Big fan. Hi, Cyan. Agarrar la orbe de B y buscar alguna iniciación con la contención de parte de Vice. Ya lo vimos mucho en Haven. Se puede estar viendo de nuevo en Ascent, pero un lindo From dardo that. eléctrico que contagia ahí un poco el Using a calor. lot of utilities early Se round soba. with no real effect. See? Y como te decía, Vice levanta Leviatan, hello, hi Dev, Riot Legend wanted NV and extends rematch. esa orbe, Yup. tiene definitiva. Ahora toca reagruparse, pero ojo porque Naxet It's ya good se though, it's good. infiltró un poco en medio. But I fear for Crew. This match, from what I'm seeing, like, Adverso se lo huele. not good Adverso for no Crew so quiere dar far. carga. Either they're not showing anything because they're like, we're winning, we don't need to change anything, so which is fine here on the defense side. Directamente, ni siquiera I guess Embarado, attack no में lo ज़्यादा quiere देखने dar को मिलेगा. en Again the quiere A dar shot cara al smoke, like medio, makes no literal, sense when you're dardos, blancos, smoking nada A shot but not taking any Ganado mid control on any round. They know by now your pattern that you don't take mid control. So ronda que se tranquiliza. Van a esperar see, probablemente they are playing un very poquito más they've y left atacar con mid la on just contención the de Vice. Que alarm bot, and then no, Serán they're los playing inteligentes, A shot saben la heavy. importancia de esta ronda también, ¿eh? No puedes terminar por perder. ¿Cuál es el detalle? Que el They've Deus grouped up. también Okay, cuenta con 5-man su execute. At definitiva. least this works. So whenever, so this is something I always say. Whenever your defaults and all are not working, just go for 5-man executes, because you minimize and you cut off all those individual decision-making points where you are faltering, and you streamline your objective. So always go for 5-man executes if your defaults and your decision making is going a bit awry.
violenta la va a Oh, bhai, also changes stream soon. Yes, Dash. activar y Welcome. va a terminar con las opciones, con las oportunidades, con los humos, con todo. Lo que Leviatan puede Timely llegar a hacer y smoke. efectivamente Please ahí go está la ahead. definitiva, ahí está la búsqueda de lanzarse directamente a la cara y de nulificar con el tiempo que queda. Ideally, you should todo lo enter it around posible. 3 La contención seconds. So, atacante ha we'll sido see. activada. ¿Cómo se Yeah, va but exactly at 3 Si no tiene- seconds. Okay, wait. el tiempo que queda? Todo lo posible. La contención atacante ha sido activada. See, exactly at 3 Y seconds. de nulificar con el tiempo que queda. Todo lo posible. La See, crew contención के atacante ha basics sido इतने activada. tight है ना, exactly at 3 seconds ये flash आता है, because they know कि around 3 seconds के आसपास ही players, like any good team, normally 3 या 4 सेकंड के आसपास ही they start entering a site. And obviously ऊपर भी उनको दिख रहा है कि अभी तक घुसे नहीं हैं, so लास्ट के 2-3 सेकंड बाकी is maximizing the basically ब्लॉकेज अगर बोला जाए तो, कि वो विजन का तो ब्लॉकेज है ड्यू टू द स्मोक, और वो घुसेंगे तो ऊपर ओपन और जेट ऊपर खड़े ही हैं उनका स्वागत करने के लिए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस फ्लैश इनेबल्स द डिफेंडर्स टू होल्ड देम ऑफ अंटिल द एंटायर अल्टी इज गॉन. अब उनको ज़्यादा एरिया देखते हुए घुसना पड़ेगा अगर घुसना है तो. ¿Cómo se van a meter si no tienen flashes? Sí. ¿Cómo se van a meter si no tienen Beautiful. humos? El tiempo se les acaba, se tienen que lanzar a la cara y encuentran la baja. Acción en el suelo, pero Delcy corresponde. Fair trades open now. Okay, Mazino gives them a slight advantage. 3v2 is still doable. So 2v2 now. Por parte de Vice, acción spacing perfecto la ronda y la spike ha sido plantada. Cuidado con el Deus, avanza, termina con Vice, buscar a doble, no la encuentra. See, one thing I've noticed, crew go for a lot of fast retakes. This will be good for them in the long run. This should have been Leviathan's round. Like they played well after the initial exchange जो हुआ वहाँ पे flash और वो सब KJ ult के बाद their exchanges, their trading and वो सब were better. और वहाँ पे KJ का जो play था Heaven पे उसके बाद I think so Leviathan had a slight advantage. उसको वो convert करना चाहिए था ये round. So it's sad, but see, crew don't let the Leviathan settle at all. Always going for fast retakes. This will bode very well for crew. This is my major positive going into Masters. ये बहुत काम आएगा crew के. South Asia का Masters पे देख सकते हैं according to you in 1.5 years. I said this at the beginning as well. We need like 3 or 4 challenges before we can actually qualify for Masters. We need more experience. We need more volatility in the current South Asian scene as well, which is finally happening. Hi Taran. So 1.5 years में तुमको देखने मिल जाए, hopefully. Baja, desactivación. Va a ir por el operator. Está muy bonita. Quedan a utilizarla como posicionamiento, etcétera. Si la Crew pierden, are not letting Leviathan settle and all. They're bullying Leviathan currently. It's all I'd say. tienen para comprar la mayoría de Like even when they were at an thoda sa disadvantage because of the plan in the 2v2 scenario, they just retook very fast, giving them no chance to settle down, which is always very good. We've seen this twice now, pistol round में और यहाँ पे. I think this is very good. So आगे जाके क्या होगा? Leviathan will always be on the lookout for such fast retakes, and then they can choose to be methodical with the retakes as well if they want to. But they can always catch Leviathan off guard with these. Leviathan are forcing the initiative here. Looks like they're going for heavy mid presence. Finally, they're going for a mid control, which is what I've always wanted them to do. I guess this is not the way I wanted them to do. se lo quiere permitir. Trying. Tried for a B split, it didn't work out. Se va a teletransportar a Melzer, quedaba cerquita de un hambre, Massino lo tiene calzado. Oh, cuidado que saca The force did not make sense for me. Maybe they already have maximum loss bonus, so they're guaranteed to get 2800, right? Marcador KRU Esports dominando en Ascent. Avanzando demasiado rápido. So they wanted to have some sort of a buy because they know they can buy the next round due to loss bonus. They had they didn't go into the round with the intention of winning, I'd say. They always maybe they wanted to win, but they always had this in the back of the mind for the 6th round. Ki next round will buy anyway. So mid tournament, the only thing I fear is whether Valorant will be healthy and lively as it is now at that time. And also if Riot is with the region. I mean Riot will be with our region. Because of the numbers we are pulling, Riot will always be with our region. That is not a doubt. Te lo digo,
repente abre, cierra los ojos y ya tienes That is 8 not a doubt. rondas That encima. will be with us. Esto se está complicando For sure. muchísimo, no se están encontrando ahí las propuestas y sobre todo la forma de corretirar su definición. Permitirle a Melzer colocar sus humos te deja See, I think so now they finally understood that they should take mid control. वो लोग actively mid control लेने जाएंगे. फिर भी I think so short smoke होगा ही होगा. हाँ. Close recon हुआ. Okay. Jet smoke करके आगे निकले, which is very good again. So was drone, jet falling, so was drone. Very good. They spotted jet. On the other hand, see, PJ यहाँ पे थोड़ा aggressive जा रही है, jet इधर aggressive जा रही है. This is very good from crew. When they know that they are trying to get mid control, they are trying to take crew is trying to take control on the both extremes of the map. तुम mid ले लो, क्या होगा, हम यहाँ पे दोनों तुम्हारा extremes बंद कर देंगे. Now you have to cross the line, right? You have to cross the bridge. So it's very good from this should not have happened, but this gives KO some chance of lurking here. They don't expect KO, they didn't spot KO as well. Recibía castigo a través de la pared, inclusive quedaban 70 si no me confundo. And see, this is what pays them the advantage. Daco recibía castigo a través de la pared, inclusive quedaban 70. Omen takes down Jet as well, जो बहुत ही aggressive थी. So what takes down? Verso también Short encuentra, move, but se da again, vuelta la ronda, doesn't pero expect Delphi Delphi to be justicia, dejando el 2 para 3 ventaja para तुरंत Leviatan. aiming smoke, so उसका चैनल कट ऑफ कर दिया है. रोस्टेड चेंजेस में क्या मसाला मिलेगा भाई, वो तो रोस्टेड चेंजेस में पता चलेगा. केओ के पास अभी मिड कंट्रोल है थोड़ा सा, हमारा लीक नहीं होगा ना. अरे यार तुम्हारा लीक है ही क्या भाई, तुम्हारा को पता ही नहीं है भाई. So there's still 56 seconds left and it's a 3v2. They can play it very, now they need to group up and play it very calmly because दो जन हैं तो either crew will gamble and put two of them at the same spot. Still it's a 3v2 advantage for them. I'd recommend them not to go B because KJ is still alive, and if they gamble towards B, उसका पूरा setup भी रहेगा. So it's almost like they have an extra man, which almost makes it 3v3 in for the defensive side. So I'd recommend them to go towards A side, और अगर जाना है मुझे water by ले लो. Godspeed के chat में मसाला देखा, मसला बड़ा है, इतना उर्दू हो गया. Sure. Tane, well played, man. मैंने देखा था तुम्हारा मैच ROG Academy के against. It was a good match. The first map, you guys played well. The first map was good. तुम्हारा वो alive बंदा कौन है भाई, जो सोवा है तुम्हारा? He's a good prospect, dude. He's a good prospect. Whoever that dude is, he's a very good prospect. Possibly 6 महीने 8 महीने में you can see him in a good team. वो alive वाला जो बंदा है, alive, हाँ, जो सोवा था तुम्हारा, वो is a solid prospect for the teams to pick up. हमारे टीम में से वो ही stood out to me, not just for kills but in terms of presence, overall awareness of the map, और ये सब solid था उसका यार. Implora, necesita, le surge demasiado empezar a sumar a la escuadra de Leviatán. With the team in lighting was okay. Que se encuentran 0-6 abajo, Klaus, en base, como si la ronda Positioning towards B, I would not recommend this, but यहाँ पे it might work for them, but I would not recommend this. अच्छा Phoenix मेटा में था, अच्छा बहुत पहले. No, mamá pato, esa Killjoy. Lighting fast then went G, ¿no? उस टीम से, I think Klaus उसी que टीम को detecta la replace. presencia enemiga, se decide meter por segunda al sitio, se escucha la definitiva y se van a trincherar. दोनों मोमेंट नेल आ रहा है, उसने नेल आ रहा है, उसने नेल आ दिया. Now they're falling. This is good. This is Se good. viene la maratón. Ponete las de running, Kevo, porque se vienen los 100 metros planos. Leviatán pasa cambio, se van por baranda, se vienen para. Why are they splitting up though? I don't understand this from crew. That is a bad decision, splitting up. 2v1 en contra de 2 de Spike, lanzando 5 segundos. Uy, cuidadito que se asomaba de buena manera, 1 en contra de 1.
Leviathan win this round. Again, fast retake. They don't let Leviathan settle at all. plantar a tiempo, asomarse, थोड़ा भी llevarse la पेशेंस base y नहीं obtener रखते un हैं ये punto लोग necesario, रखने नहीं देते हैं obligatorio दूसरे para वाले los को बट आई गेस दोनों साथ में जाते तो ज्यादा बेटर रहता ये जगह पे they could have traded और क्या पता यहीं पे 1v1 हो जाता या मे बी they would have lost मैं तो सिर्फ कैरी होता हूँ ऑफिशियल में भी बात तो सही है Leviathan at least got one round. So this is how they got that round. All because of Crew's mistake. Once they were aggressive, they got the kill for Jet. They shouldn't be as aggressive now because I think so. Jet को थोड़ा winery की तरफ आ जाना चाहिए था if he wanted to be still that aggressive. Shot में तो Gardens था तो I think he was at the correct position. Sova was caught off guard. He couldn't do anything. So Jet is the only one I'd say जो जहाँ पे थोड़ा सा गलत थे. Baki, I think so. I think Jet was also falling back, so not really anyone's fault, but Leviathan catch them off. क्या गुंडा बने यार. Se duele elección para el competido, porque este es el Still positing with this almost the same default, but Jet जैसे मैंने बोला दूसरा pairing में आ जाएगा. So Jet now peeking towards A shot. Now they know it's because they know कि now they are focusing mid थोड़ा सा. So Jet is boosting going for a different angle. Any upside from Zeta division? Maybe they can. They're better than last season, definitely. Hi Ayan, OP. क्या बात है. primero contra 6 de Crew. Compra casi completa, porque अपना roster Godspeed को नहीं पता. And hay dos escudos ligeros para Leviatan y Naxxed. Qué sorpresa. And they also don't expect because Jet has never been मतलब A shot एक round गई थी Jet, so they don't expect Jet. और उस राउंड में भी आई डोंट थिंक सो जेट को स्पॉट किया था इन्होंने दे स्मोक ए शॉट जेट वहां पे मिड टॉप मिड होल्ड करके गई तो फिर जेट फॉल कर गई थी सो या Prendi se escapa, se sale con la suya en 2 de vida, ¿cierto? Con un 5 para 4. Y Helsing, que se le complicaba encontrar el dardo. 2 de vida para Naxxed. Klaus esperando en previa de B donde van a poner la prueba. Vice y King. थोड़ा सा पीक लेट राउंड वेरी गुड Mitad de vida y se escucha la furia el cazador. Naxxed en 2 de vida, descuenta y अकेला बंदा है जो गेम के बाद मेरे को ऐड किया एंड जो अच्छा आदमी है रिस्पेक्ट वाला सैंडलेट क्या बात है la cadera de Shakira Naxxed bailando sabroso en el sitio de A. 5 para 3 con un King complicado. Si mata Secret otro más en बड़ा 2 de vida. रिस्क Si mata otro. No, Naxxed. मेरे को भी पता तेरे को भी पता डैश तुम लोग सूरज और गौशी बात कर रहे हो क्या बात कर रहे हो लीक क्या ही करूं मैं इसमें लीक क्या करूं हेलो आया चल गया पीसी क्या बात है Vestite, basta. Basta, que hay gente mirando Naxxed. एंड यूजलेस था ये इस एचपी में आगे जाके ये सब दिखता है वैसे Viva la bestia. Y ahí está. Se acabó el reinado. 2 balitas. 2 de vida le quedaban al chileno. Expuesto al verso en el carril central. Se asoma el de uno. Descuenta. 7-1. El marcador. No hay mapa donde Naxxed se sienta más cómodo, yo creo que hacen. बात से चलता है Hacen. जेटा और पिक कुछ हाँ मैं पहले था बोला तो मैं कि यूजलेस था वो उस एचपी में आगे जाके आगे जाना याद आ गया मेरे को Tiene una confianza tremenda, tiene controlados los ángulos, las esquinas, los picks de operator. but see I think so crew is taking all that liberty because they know what Leviathan is doing. Estás a 2 de vida y aún así se lleva 2 más, ¿no? Es impresionante el trabajo que tiene, la forma y la respuesta que puedes llegar a tener. It just feels like an underdog match, you know, like so जिस तरीके से it's being played out. ये भी ठीक है सर 5 लोग बात करो पहले तो 6-7 लोग रहते थे क्या बात है तने clip greater than discipline सही बात है Solamente सही 2 बात है de vida. 7-1. Very true. Tienen ventaja, pero el cambio de lados preocupa demasiado que apenas estemos en ronda 9. Leviatán okay they've changed their setup slightly KJ is now towards A or both the initiators are playing towards B okay so they're compensating for KJ's loss at B by strengthening information play towards B कि भाई अगर कोई आए हम डिसेबल भी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और डैमेज भी दे सकते हैं both are damage dealing abilities as well जेट अपना नॉर्मल टॉप मिड पकड़ के रखी है मौका ऑब्जर्वेशन तो है यार necesita 4 rondas
rondas más para un 7-5. Observation तो है, क्या कर tan सकते हैं? feo. Si no, todo esto se va a complicar. La segunda mitad te pondría en problemas. Si Adverso tiene información, ahora sí se verifica de this que no estén spotted vinos, de only. que no haya ningún Delsic colado por ahí, coqueto, buscando, por supuesto, esperar Again, el when he avance. split. Pero Delsic lee de forma correcta y mucho cuidado, Puede disparar, el Neo se lleva la vía del rey, el avance viene, pero es un 5 para 4. La diferencia numérica es clara. Klaus termina con Melzer, colado. Información, todo esto se va más para un 7-5 que no es... See, ये जो दो यही दिखाना चाह रहा था मैं, इसके लिए वेट कर रहा था। रिकॉन और जो नाइफ यूज किया उससे दे क्लियर्ड ये पूरा बी का आउटर पोर्शन। बस बड़ा गेमिंग सिखा दे प्लीज, हमारे सब लाइनर्स अलग है मेटा से, तो बस बता दे सही कर रहे हैं या गलत, हम नया मेटा बनाते हैं। प्लीज सपोर्ट। ओके, सपोर्ट कर दूंगा। क्या क्या सपोर्ट चाहिए बताओ, कर दूंगा। मेरे को वॉट भेज दो, मैं वॉट का फीडबैक तुमको भेज दूंगा, पूरा डिटेल रिपोर्ट। पक्का। Godspeed XD, क्या बात है, No esté tan mal, que no esté tan feo. नुमाइश Si no, कर रही है todo मेरी। esto se va a complicar. La segunda mitad te pondría en problemas. No haya ningún... That allows them to rotate, El देखो। avance viene, pero es un 5 para 4. La diferencia numérica es clara. Klaus termina con Melzer. Tacoría responde, pero Again, Klaus se lleva la they're not letting them have control of site, which is very good. del It's duelista. very good. 4 para 2, complicadísimo. En situación semieconómica. No han detectado a Bai, no van a ir a comer directamente. Y ahí está Klaus. They don't let them have control of site for long, which is very good from Crew. Y el 8-1 en el marcador. 8-1 Crew. Early pressure डालते हैं, अगर साइड का कंट्रोल उनको दे भी देते हैं तो वापस तुरंत लेने की कोशिश करते हैं, which is something I want us Indian teams to do as well, कि तुरंत कंट्रोल लेना पसंद, मतलब ज़्यादा ज़रूरी है हमको, instead of just waiting, especially on a map like Ascent where you have multiple ins. जैसे हेवन में ये साइड में there is not a lot you can do, तुम जल्दी कंट्रोल लेना चाहो तो, खास करके करंट मेटा में where you have breach as a prevalent hero। हम सब तो फ्री में साथ में खेलते हैं, नो पैसा तो पैसे की बात नहीं था ना, मैं बोलता हूँ मेरे को वॉर्ड भेजो, मैं फीडबैक पूरा डिटेल्ड भेज दूंगा। Aseguro que lo pueden jugar al 100% fácil los 10 jugadores. Un poco más nervioso, inclusive los breaks entre partido y partido. Me empiezo a preguntar si se sienten al... और नहीं तो देखो, so guys, हाँ, I'll good announcement at the end of the VOD review, ठीक है? I have a good announcement for you guys at the end of the VOD review. nivel de intensidad, una serie al mejor de 5, una serie larga. Así que atentos con eso también. A medida que vayan pasando los mapas, Okay. es realmente So now this is, I think so, the second default in गए हैं। nivel de intensidad, una serie al mejor de 5, Both initiatives, देखो damage dealing यहाँ पे ये कर दिया, atentos con eso también. A medida que vayan अब knife से disable भी कर दिया इनको। empieza a ser una estadística importante, ¿no? Por así decirlo. Cuidado con Massimo, que libera los Fury al cazador y conecta. Alt भी use कर दिया, so now they've expanded a lot and Leviathan already, अब पता चल गया उनको कि Sova and KO are playing B. If they're smart enough, they'll realize कि इसका मतलब है कि KJ is playing towards A, just like in the last round, or I think they can now push towards B. If I was Igel, I would say कि अब B घुसते हैं, like maybe a B split or B pure, but yeah, go towards B. Por ahora, ronda número 10 de मुझे charge money from my team, mental pressure रहता है, कुछ भी गलत होगा मुझे ही भरते हैं। अरे contra compra. सैड बातें भाई, तो सैड बातें करती Con ese Caio. Vice también su contención. Y varias opciones, varias posibilidades de entrada. Parece que va a ser por B. No hay nadie en el sitio, y esto es muy importante. No hay They nadie completely left B एक तरीके से, they expected this, so good from Crew, they expected this sort of कि altar ये सब आएगा। hay nadie adentro del sitio, se libera la contención. Leviatan por supuesto no lo sabe, si no ya estarían corriendo probablemente. Se tiene que tirar para atrás la escuadra de Crew. La colilla revisa 4v5, 5v5 है, they've taken control. Paso de las sombras y Tacolilla, que aprovecha que está en coma, se arriesga sin miedo al éxito. Papi, dardo eléctrico a los pies y se acabó. Naxa descontaba el rey. Se complica un poco la ronda para la Levianeta. One-tapeado de parte de Melzer. So again, no time to waste. देखो और कम हुआ है, but पहले तो full भरते थे। अभी देखो, when do they plant? See,
Clan के बाद just count the Paso de seconds. las sombras. 1, Y Tacolilla que 2, aprovecha que está en coma. Se arriesga 3, sin miedo al éxito, papi. Da 4, eléctrico a los pies y se acabó. Naxat descontó al 5, rey. Se complica un poco la 6, ronda. Para la Levioneta. 7. Aguanta piado de parte de Melser. Okay. Instant retake. Yeah. हमेशा आयन हमेशा. This is Crew's defensive क्या बोलते हैं USP. Se acaba la This is their core ronda. competence. This is their win condition. Win condition तो नहीं बोलेंगे, but Se viene la this is sort of desactivación their del KRU en Ascent. Está intratable, Kevo. core competency. This is where they're good at. You know, pressurizing them early on. Control देते हैं पर तुरंत वापस ले Los लेते हैं. hacen gastar herramientas definitivas y aún así en This situaciones is the 4th round they've done this thus de missing. retake lo manejan con supremacía. Every time there has been a retake, they've done it very quickly. ¿No? Y They've ese executed Deus the que retakes con very Deus fast. Con esa definitiva rompe todo, ¿no? Complica las cosas. Y aún cuando quizá no se llevaba bajas. ¿Cómo? Mira el score de Kesnit. Uy. Mira las assists que tiene. 14 Okay, assists. they grouped up towards B. पैसे नहीं हैं, they force bot. Con habilitaciones, con This cuchillos, con this feels like a definitivas, full toma blood citas, B un tipo rush. jugador KJ is back at B, though I think so they've returned to the first default. हाँ, Y siempre teníamos la Jet duda, mid ¿no? pay Lo with the vimos op. con el Sky anteriormente, They've returned ¿no? to the Iniciando, former no default. tanto. Incluso en el juego contra Shadow será diferente. En esta ocasión está dando un papel But this spot, I think so. muy diverso Okay, que habíamos visto. the spot's over. Todavía está Coreana, Axel responde, Marcelo en el suelo, Vice logra corresponder, pero está Naxet otra vez con Moment ulti use करके तुरंत यहाँ पे आ गया. Quiten el Operator, ¿cuántos años llevan ya con ese Operator? Tiene a Derso avanzado en la cochina, Naxet al lado de Kesnit. El rey ha caído. They have a pre-plan setup, I guess. I don't think so. Pre-plan setup है यार. तूने पहले के rounds नहीं देखे. वो लोग बस एक साथ बात करते हैं. I think so. Communication का बहुत smooth है. उन लोग communicate करके घुस जाते तो बहुत अच्छा. सिर्फ एक retake जो वो लोग हारे, वो एक लौता retake था जहाँ पे वो लोग अलग-अलग जाके कोशिश किए fast retake करने का. उसमें भी fast ही था, but अलग-अलग. अगर उसमें भी साथ में जाता है, I would say they would have won this. Captions look like this. 10-1 en el marcador. ¿Qué está pasando en esta serie, Kevo? Venimos de dos mapas extremadamente Finally, parejos थोड़ा बहुत y de buy repente है. KRU dijo, bueno, But basta, Leviatan, bueno, basta. is LATAM better than ACA? No, LATAM is not better than ACA. At least from what I've seen in the two challenges, I think ACA is better than LATAM right now. BR is the best. BR is the best, I would say, right now. If I have to count 4 regions, which is LATAM, SEA, SA, and BR, I would say BR is the best right now. Definitely. 10-1 el marcador. Gigante ejerciendo, no sabe. That is why I said BR is better. I'm not considering BR and LATAM. BR and LATAM are different regions for. Yeah, Crew is LATAM, Loud is BR. Is it better or not on paper? कुछ भी हो टूर्नामेंट वो better. क्या बात है तने? क्या बात है? Yeah, so I didn't say then, but Loud is better. वो नहीं था. I never said Loud is not better than AC. I said LATAM is not better than AC. From what I've seen in the two challenges. No encuentra espacios Leviatán. Si no se asoma. Okay. Wapas, they've reverted to the bad habits, Leviathan. And Crew are very comfortable. Crew is on it. I know Art now, which is why I said Crew is LATAM and Loud is BR. I know. It's over guides करके YT channel. हाँ, that's a very good channel. तने. Por B, si no da cara por baranda, está todo el tiempo mezclando su juego y hace que Leviatán वैसा कुछ करना भाई resources नहीं है वैसे करने के तने. Honestly करना तो चाहता हूँ but resources नहीं है वैसे करने के. no se sienta seguro en ningún lugar del mapa. Naxet literalmente se metió en la cabeza de sus rivales. This time he's caught because he went further ahead. He was not as disciplined. Lose हो रहा है आयन. As possible. That's your opinion. Y había que tirarle flores para que se mande para adelante sin pensarla con un dash y termina acribillado por Tacolilla. A ver, Leviatán, si pueden levantar en la última de la primera mitad de adverso, va a liberar su gran búho, ahora sí con mucho más espacio, con mucho más...
एकदम बधिर जैसे बैठ जाता, क्या बात। Libertad, sin ese operator venenoso. Very, dando it's vueltas the por el same mapa. old from Leviathan. The Me reset is a encanta, ठीक man. है, Ya reset dijo, is bueno, good, 10-1, me but mando अभी para adelante, hago esto para again A divertirme, shot decía smoke, Naxet. Bueno, pasaron मिड cosas. कंट्रोल अभी तक लिया नहीं, मिड का लैम्बॉट एक राउंड इन्होंने, 2 राउंड तोड़ा है इन्होंने मिड का लैम्बॉट. Dele una Leviatán, Okay, Melzer acaba con su very espejo. good, 3v5. Mira con un Now they controlador should group poderoso up. y el Deus quiere venganza, se lanza directamente a principal. Still No going for detecta a nada split. aún, I have pero no clue why they're sabe going for que a hay OC. alguien ahí que cuchilló. Ratnon, we're talking about crew versus Leviathan here. Not really interested in Aspas right now. It's okay. I mean, like, there are many cheaters. There are many CSGO cheaters playing in Valorant. If we are to kick everyone out, तो players नहीं बचेंगे. There are many CSGO cheaters playing in Valorant. Fue destruido. La colilla se mantiene. Many Está por CSGO pasar y cheaters. mira el Deus con la mira tensa en árbol. I don't understand this philosophy of going for a split here. I Con bala fría, think mucho an cuidado, execute is quedaba better. This is complicado, a el flash. this is according to me a wrong call. Tiene que correr porque aparte The wrong está call. cegado. Lo intentan correr y desde abajo Masino hace su trabajo y el Deus corresponde. Giving them isolated angles to work on. Masino al lado del Deus, el Deus se lleva el rey. 3-1 adverso en una ronda que era suya. En una ronda donde ya no hay operator, donde tenías todo para They played the round so well, but then está saltado de manos. their mid-round calling is bad. It's what I've understood from ये पूरा half. Their mid-round calling is bad. Leviathans. इंडियन सीन में भी तो है, अभी तो और रोस्टर ड्रॉप किया नहीं, तो वो भी तो CSGO में चीट की. क्या बात है. Lo picada a la derecha. El Kun que se desajusta The un poco mid-round la calling is jugada very en el bad, momento, ¿no? Leviathan. Que se relaja un poco, que se puede tirar dos mapas súper calientes a Kevo, que todos los jugadores de asistencias, Naxet metiéndose en la cabeza completamente de Leviatán, asomándose por todas partes con Operator en todas las rondas y descontando prácticamente siempre. Klaus defendiendo muy bien también cuando le tocan individualmente por explotar, llegar a contar al principio. Y lo hemos dicho en Incantable responder, es un equipo de hacer un lado incómodo con el KRU, ¿no? Nota, leen de buena manera rotaciones, ejecuciones que van a hacer con definitivas y saben que van a hacer algo al respecto, así que ponen a veces Leviatán rondas. No podés ir a media o en previa de B, invadir el mental de la escuadra de Leviatán. Ni hablar que Evo, la importancia de este pistol si ये लोग का सब लाइन होना, मुझे भी लाइन पे जाना है. चला जाना भाई, तने अभी होगा लाइन्स तब चला जाना. Recordamos que es una serie al mejor de 5. अभी इंडिया में लाइन्स होंगे तब चला जाना, Todavía no चालू se consagra होंगे. campeón, tiene que meter un mapita más. बहुत साल हो गए, सही Así बात है. que tranquilos, fan de Leviatán, esto continúa. साल तो हो Fan गए de Crew बहुत. todavía no abran esa botella, todavía no festejen, porque por lo menos tendría que भाई pasarse. लेवायतन का सेटअप दिखाओ. ओके, लेवायतन का सेटअप हेवीली केजे ए पे सेटअप करके, सो केजे इज प्लेइंग सोलो ए एंड द 3-man raid party. Okay, this is good set. This is a very good setup. ओमन यहाँ पे पैसिव थोड़ा मिड पे देख रहा है एंड केजे पूरा ए गार्ड कर रखे. ए शॉट का भी प्रेजेंस पता चलेगा, ए मेन से कोई घुसेगा तो भी पता चलेगा. गुड तने, आई फील यू ब्रो. हाय लीवाई, मुंबई में स्काई स्पोर्ट्स का है ना, देखने जाऊंगा. सही है, होपफुली तने आगे जाके और होंगे, क्या पता कोई दिन तुम पार्टिसिपेट भी करोगे उधर. साले जो सेल वाले नहीं होगा यस, नहीं तो कीबोर्ड या सीपीयू कंफर्म. क्या बात है, सीपीयू पूरा सीपीयू उठा लोगे तुम सेल में. Un mapa más. Pistol clave que एंड दे सीम लाइक दे टेकिंग एम इन कंट्रोल बहुत ही क्विक. पूरा मिड छोड़ा हुआ है. आई गेस मिड का क्रॉसिंग तुम्हारा केजे का टरेट देखेगा. cambio de lados. Arranca la acción. Se viene la acción de frente. क्लियर किया, Y uy, calma todo, स्पाइक ¿no? लिया. Se bajan las Yep, they're revoluciones. going for fast. Quitan lo acostumbrado y apenas se viene el arranque. Ahora sí, donde está Vice esperando. आई थिंक सो केजे को यहाँ पे इन्फो भी मिल गया ना, केजे के टरेट और ये सब. और ये स्मोक आया, Calma दे todo, लाइक ¿no? चलो चलो उधर बहुत मल्टीपल लोग है. बिकॉज केओ का ये आया, ओमन का स्मोक आया, सो ऑब्वियसली कि वो लोग बी पुश कर Se रहे हैं. bajan las revoluciones. गुड Quitan lo रिएक्शंस फ्रॉम acostumbrado क्रू. y apenas se viene el arranque. Ahora sí, donde está Vice esperando. Lo que va a ser la ejecución disparando Sí, ya. shot clear किया, nice. Igualmente para Nice Vice, idea. quiera, intenta avanzar. Un retake completamente cantado, ya preparado para los. केजे का लिटरली पूरा सेटअप खत्म हो चुका Sabían है que el डिफेंस sitio का. de A iba a ser el lugar a conquistar. Naxet
Se ha quedado en la esquina y Vice prepara el baile de Short lado igualmente con smoke, la okay. Classic, evitando फ्लैश करके el एम इन arranque de este मतलब estilo हेवन de पे थोड़ा Elsie पीक लेने की कोशिश। con Okay. la Classic, इस evitando इधर यहाँ पे 4 जन एक cualquier साथ ए शॉट arranque निकल de este रहे हैं। estilo. ओके जेट फ्लैश किया। See, this is why KO is good. Peripheral से देखे आज तक कौन सा सेल नहीं होता। CPU से एम प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड, हाँ उसका वैसे भी सेल नहीं होता यूजुअली पेरिफेरल से भी। मेरा लैंड के कम चांसेस हैं, लेकिन 2 दिल्ली साइड के लोग हैं, एक गुजरात और एक मुंबई। ट्रैवल का पैसा नहीं देते ना। Elsie, molesto, termina por darle alguna habilitación a su compañero. Vice hace Good la doble retake. hacia arriba, dos They have a despejados. rehearsed Vice ponía retake, con unlike you who just go for fast retakes. Leviathan have a rehearsed retakes, which is why you see इधर 4 जन इधर आके खड़े हुए। cualquiera intenta avanzar. Un retake completamente cantado, ya They're preparado grouping para together. los They Leviatan. have a very set way of retaking a side. कि भाई वुमेन फ्लैश करेगा, जेट इधर डैश करेगा स्मोक करके, केओ पॉप फ्लैश करेगा, उसके ऊपर सब कोई निकलेंगे। तो बेसिकली डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट कर रहे हो। पहले फ्लैश से तुम उनको थोड़ा सा डिसोरिएंट कर रहे हो, उसके बाद जेट का डैश आ रहा है स्मोक के अंदर, तो डिस्ट्रैक्शन। और फिर असल में जो मेन रेड पार्टी मतलब जो मेन एक्चुअल रीटेक स्क्वाड आ रहा है वो आ रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पे केजे जो डिस्ट्रैक्शन है उसको उसका एडवांटेज लेके हेवन से पिक कर रहा है, व्हिच इज वेरी गुड। Sabían que el sitio de A iba a ser el lugar a conquistar. Naxet se ha quedado en la esquina y Vice prepara el baile de la Classic. देखो देखते हैं ये रीटेक, दिस इज अ वेरी गुड El रीटेक। arranque de este estilo de Elsie, molesto, termina por darle alguna habilitación a su सी वो compañero. डिस्ट्रैक्शन का Vice hace la यूज doble desde करके arriba, dos वो despejados. डिस्ट्रैक्शन का यूज Vice करके ponía con el avance, केजे vence el इज kit para पिकिंग फ्रॉम terminar हियर। el trabajo. Retake limpio, completamente fino por parte de Leviatan, que tenían todo planeado, que sabían वेरी que se गुड iban a रीटेक। meter al हेवन से एक ही बंदा भेजने का, ये शॉट से अच्छा है उसका। पुराने को सिर्फ एमिन देखने बोलो नहीं तो तने इनका ये सेटअप काम कर गया बिकॉज इनके पास केओ है। केओ नहीं है तो हमारे पास तो ये काम नहीं करे। KO Phoenix, I think 3-2 is the best way to go because ऊपर वाले को अगर एक बंदे को भेजो, अगर ऊपर वाला मर गया तो हेवन का कंट्रोल चला जाता तुम्हारा। 3-2 is better हमेशा अगर तुमको रीटेक करना है। 4-1 उतना अच्छा नहीं Take है। de Leviatán y una lectura de KRU que quizás no fue 4 tan लोग जिंदा adecuada, थे ¿no? ना, नहीं 5 लोग जिंदा थे। पांचों के पांचों जिंदा थे। Porque los mueven desde Heaven un poquito con utilidad y lo que hacen es orientarse a presionar este sector, ¿no? El sector de jardín se mandaba Masino flasheado para adelante y se exponían también los demás intentando ayudar al embate que se venía por puerta destructible, se exponen a Heaven, lo cual le permite justamente esto que hablamos siempre, ¿no? Del llamado de atención, de que de repente tengo que dispararme con este सोवा, ओमेन, जेट, केओ शॉट से आते हैं और केजे हेवन से आती है। y le doy la oportunidad a अब केजे अपना नॉर्मल डिफॉल्ट, आई थिंक सो दिस इज द डिफॉल्ट सेटअप। वो उनका पिस्टल का कुछ स्टार्ट होगा, viene दिस por इज द otro डिफॉल्ट sector para सेटअप। asomarse, agarrarme distraído. वेरी Lo hace सिमिलर muy bien डिफॉल्ट्स Leviatán, हाँ un क्रू और grupo लेवायतन के que toma una apuesta डिफेंस prácticamente पे एटलीस्ट। que no termina de dar resultados. Leviatán, क्रू इज perfecto मोर en अग्रेसिव principio, इन देयर अटैक, clave si es que buscan el comeback Good en ideally. este tercer mapa. Cuidado que la agarraron con la granada en la mano. Uy, Delsic, la Classic más peligrosa de todo el oeste. Encuentra la baja, pero es un 3 विद para दैट 1 con HP Naxet. केजे रेड लगा के सिर्फ हेवन का जम देख सकती ना। Cuidado. पर वही है ना, सिर्फ हेवन का जम तो वो पैसिव हो जाएगी, तो उसका होने का नहीं होने का कोई फायदा नहीं होगा। Marshall, no hay que subestimar. La Spike en Narnia, eso sí, no tiene nada en Naxet en este momento. No tiene utilidad, no tiene escudo. Una Marshall. इससे अच्छा केजे एमिन का टरेट लगा सकते हैं ऊपर हेवन पे, ठीक है, जो और भी कहीं से निकलेगा तो भी देख सकता है, पीछे से कोई आए तो भी देख सकता है ना। और दोनों जो प्लेयर्स हैं हेवन वाले वो कूद सकते हैं ये शॉट के साथ साथ। शॉट वाले आने के बाद शी कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। वही तो बोल रहा हूँ, तब तक अगर उसके ऊपर पुश हो गया तो तुम एक सिनारियो सोच रहे हो, मैं इंटायर सारे सिनारियोस की बात कर रहा हूँ। तुम एक सिनारियो सोच रहे हो कि ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ नॉर्मली अगर कोई भी सिनारियो हुआ उसमें पेयरिंग रहने से ज़्यादा ज़्यादा काम आएगा। वो अगर वो सिंगल रहा तो वो पूरा कंट्रोल चला जाएगा उसका, इन केस अगर पुश हुआ तो। Y un sueño para el chileno que está teniendo un excelente mapa.
La primera misión, la हाँ, हेवन से एम इन वाचिंग टॉरेट, वो पीछे कुछ आएगा तो भी देख लेगा और दोनों जन कूद जाएंगे शॉट वाले के साथ एम इन स्मोक primera करके। quest बेटर, de esta ronda बात तो सही। 14 es levantar la spike. Check. Conseguido. Y ahora गुड डैमेज दो, डेल्सिक ने अच्छा डैमेज दिया, इवन दो 3 जन बाकी हैं अभी भी, बट डेल्सिक का वो 2 किल बहुत काम आएगा आगे जाके। cuidado con eso, uno mirando en base que no infiltren por medio, uno mirando previa de B y el otro por baranda regalando principal de A, pero listo para darse vuelta. 3 Y नीचे después से, Naxxi, हाँ tú sabes, मेजॉरिटी sabemos नीचे से nosotros, जानी चाहिए, मेजॉरिटी हेवन से tiene que नहीं। desperdiciar tiempo haciendo esto, limpiando ángulo por ángulo. Tiene la presión de que se le asome cualquiera por Heaven en este momento. It's because heaven से you have less number of angles to clear, तो तुमको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। हेवन से जंप करना is very awkward, No lo sabe, pero मल्टीपल podría लोग अगर रहे तो। subirse a Heaven inclusive. Va a cambiar el arma, va a levantar una Spectre y va a conectar con la Spike. Ojo con Naxxet. Va a presionar. You have to assume कि ओपोनेंट का भी सेटअप है ना, अगर तुम्हारा है तो ओपोनेंट का भी सेटअप, मतलब तुम्हारा अगर रीटेक का सेटअप है तो ओपोनेंट का भी पोस्ट का कोई सेटअप है, तो नेचुरली अगर तुम ऊपर से मतलब मेजोरिटी को भेजोगे तो दिल भी प्रिपेयर्ड कूदने के समय। ये कोई मेरे रैंक वालों को बता दो, सबको हेवन जाना है, शॉर्ट क्लियर करके डोर से किसी को नहीं जाना, वही बात है, शॉर्ट से मेजोरिटी जाना जरूरी है। Para el sector de destrucción en esta tacolilla. Sólido tacolilla. Good, they also No get the perdona. plan, तो अच्छा भाई होगा Termina उनका de नेक्स्ट राउंड eliminar y esto es el tercero para Leviatan. Hacer ruido tranquilito y efectivo. Qué bueno eliminar a Nax. Ya sabemos lo importante que es mantener armamento. Onda que se define, permitía igualmente. El 11 es. Es que. just still on the bonus. Ojo, ojo. Sí. Hemos visto mapas que Hi again, hi Mimosa, क्या हाल? क्या चल रहा है भाई बताओ, आज तो संडे है, सब मस्ती कर रहे होंगे। एलईवी वाले आरजी की जर्सी में क्या कर रहे हैं? अरे अरे अरे, बेचारे आरजी वाले, ये बहुत डैमेज दे दिया मोसा ने। ओ भाई, अच्छा अच्छा रेटॉर्ट था, अच्छा था, मेरे को पसंद आया वो, अच्छा था रेटॉर्ट। están como muy orientados para un lado, ¿no? O sea, indiferentemente del mapa, más que nada el choque de equipos, pero que de repente prevalece demasiado. Okay, they've again changed their setup. So I think so Leviathan वाले क्या करेंगे? They're continuously going to keep them guessing थोड़ा बहुत कि कहाँ पे क्या खेल रहा है, कहाँ पे कौन खेल रहा है, which is maybe a good thing. But crew again, crew are more grouped up than Leviathan, which is good for crew, even though उनको पता है क्या होता है, मतलब मैच का स्कोर लाइन उनको पता है, but this is good for crew. En ese choque de estilos o en ese choque de equipos, uno de los dos lados del mapa, así que ojo con eso también. Hay que ver cómo lo van a efectuar ahora mismo, especialmente esta ronda que es sumamente importante. Y el arranque agresivo por parte de la escuadra del Kun, metiéndose de forma violenta. Se केडी का पूरा सेटअप चला गया, viene la ejecución y una situación de शॉट में उनको स्पॉट भी हो गया, देखो Leviatan. कितना फास्ट अगेन। आई थिंक सो ये लैटम का, ये लैटम का ही हैबिट है लग रहा है मेरे को, ये भी बहुत फास्ट आ गए हैं रोटेट पे। Quedaban detectados y nulificados. Vice en la misma posición que hace unos cuantos. They'll also retake very fast. Puede Yeah. llegar a castigar desde arriba si lo hace de buena manera. Vacino parece, se lleva la vida. Vice sigue haciendo su trabajo y Taco Liga dentro. देख तने 3-2 वाला, No saben. this is how you do it. La desactivación Vacino hace su trabajo. मजीनो ने मेरा कर दिया, पर look at this. This is how you retake भाई। Situación de retake otra vez. देखो, Leviatan. ध्यान से देखो, उसने पहले पीछे से क्लियर किया, तीनों जन साथ में आ गए, ऊपर Quedaban detectados y nulificados. चाकू लगा के पहले डिसेबल कर दिया है, En la ठीक है। misma posición que hace अभी केओ और केजे उस तरफ है, हेवन की तरफ, और यहाँ पे ये फ्लैश देखो किस तरफ जा रहा है, ये फ्लैश ध्यान से देखो किस तरफ जा रहा है, ये फ्लैश इस तरफ जा रहा है ऐसे एंगल में, तो बेसिकली ये जेन को भी फ्लैश करेगा, ठीक है, और अंडर हेवन वाले को भी फ्लैश करेगा, तो कूदने में हेल्प होगा अगर किसी को कूदना भी रहा तो, है ना। और एम इन स्मोक कर दिया गया ऑब्वियसली, minutos en la pistol. Puede llegar फ्लैश आया, फ्लैश के पीछे थे पुश, de buena manera. Vacino parece, se lleva la vida. Vice sigue haciendo su trabajo
सब कुछ हो गया, ऑलमोस्ट वॉन द राउंड। इसके बाद मसीनो का मतलब ये इंडिविजुअल प्ले है, बट मसीनो का इंडिविजुअल प्ले है, बट आइडियली लेवाथन हैव प्लेड दिस राउंड। लंच में क्या है आज पता नहीं यार, मतलब आज लंच में क्या है। ब्रेकफास्ट में तो इडली थी, लंच में पता नहीं अभी तक क्या है। थोड़ी और नींद होगी लंच में, इसके बाद स्ट्रीम के बाद शायद एसी चला के सो जाऊंगा। Siempre Masino, cuando las papas a los siempre son lo que juega Masino, mamita querida, en una ronda. 5 clones of the same pro player become the best team in the world, maybe, or maybe they'll have ego clashes. They all 5 of them will want to play the same night breakfast Italy. क्या बात है मतलब 5 clones of the same pro player become best team in the world. नहीं यार, they'll all want to play the same role. Que se complicaba muchísimo, hay que decirlo, se complicaba realmente mucho. Answer that, Malav. Answer Tanay's question according to you. Para la escuadra de CRU, 1 contra 2, Masino. See, crew का एक चीज है, their executes are good. They're getting beaten in the post plant very convincingly, I would say, because unlike crew, Leviathan have a very set post plant का मतलब set retake का setup. और मजीनो ने ये करके बहुत ही ज़्यादा चेंज करते हैं, साइकोलॉजिकल डैमेज भी बहुत पड़ा लेवाथन को, सो इट्स टेलिंग कि दे स्टिल वांट टू पुट प्रेशर टुवर्ड्स ये, व्हिच इज गुड। मैं तो फ्लेक्स हूँ, मेरे 5 लोग होंगे तो अच्छा खेलेंगे। सिंह तो क्या बात है, 5 टट्टी निकले तो तने। Pero se acaba de convertir en un 12 y ya es punto de mapa para la escuadra de CRU que quiere presionar rapidito para el sitio de A. Possible our teams work to different personalities and like I guess, yeah. सुन लो तने। La línea de ataque. Espera Melzer en Heaven. Va a dar cara, encuentra, buena baja. Prolijo se vuelve a esconder, gana tiempo y espera. जो भी होता है 40% of the time I play. Esto es su equipo. A ver si King lo puede habilitar. Que es Nate. Flash al sitio. See again, their executes have been good up until now. इस बार they got shut down थोड़ा. Esto es su equipo. Encuentra un búho en Even though I'd say they've been more successful than Leviathan. The crew lose from 12 years. They've been more successful than Leviathan for sure. See, Jet इधर आ गया. Now, this is just timing. Melzer played well on timing. Gana tiempo y espera el resto de su equipo. A ver si King lo puede habilitar. Que es Nate. Flash al sitio. Al medio. El corazón del sitio de A. Y Melzer. Junto a King, cada quien encuentra un headshot. 5 para 2. La escuadra de CRU complicada en la ronda número. You have a closing out problem. Estás pensando ya no. मतलब हमारे इंडियन टीम्स में भी ऐसे बोला जाता है क्लोजिंग आउट प्रॉब्लम। इट्स मोर लाइक द from what I've seen, crew have problems dealing with post plants so far. मैंने पहले भी इनको देखा था, crew is VLT of LATAM। क्या बात है तने, क्या बात है। भाई el spike literalmente en la boca del lobo. They still have a lot of time, even though it's a 2v5. They're like, we can still casi imposible retoma. Aprovechamos, ¿no? Max to max will go for the save or something. Yeah, we can make them hold. We can hold them off for as long as possible. You know. 12 से हारे हैं तो एकदम जी वाला भी है 9-3 क्या बात है आदित्य। Y la realidad es que en esas situaciones uno de los fundamentals del Valorant es que cuando choke the breeze almost and even fracture. Yes, Malav, bhai. estás en desventaja numérica. I didn't watch it live. I watched the replay, but yeah, dude. Lo que vos querés es buscar peleas aisladas. No querés darle la posibilidad a tus rivales de que se intercambien. No querés todo el tiempo agarrar un sitio si te escondes. Más para intercambiarte. Por eso tiene que अब तो ही ना जाके कोई फायदा भाई। Mozino is trying to take a kill or something. So when crew lose this, yeah. Very good timeout again. 3070 low or wait for inter GPUs. ले लो भाई 3070 Manan bund. Welcome to the channel Manan. Te vas a hacer porque después el sentido mental por parte de CRU, una gran selección que tuvieron,
KJ is back on B, guys. Bajaj best chamber even NA who is in a jet convert. यार I'd say Alliance वाला जो player यार उबासी नहीं ले पा रहा हूँ, पेट दुख रहा है मेरा। हाय मैं तो कब से स्ट्रीम देख रहा हूँ। अरे सॉरी भाई, तुमने कुछ लिखा नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्रॉनिकल क्रॉनिकल हाँ बोल सकते हो। आई थिंक क्रॉनिकल हाँ। I was about to say Alliance वाला बंदा लक्कर या कुछ, but I think so he's also played Jet कभी। मैं हूँ बेस्ट चेंबर ऑफ ऐसे आ जाओ ब्रॉन्ज लॉबी में, क्या बात। And again see crew grouped up, so crew का ये they're going for a B split I guess. Close recon, A shot smoke, आ जाओ। ड्रोन बीम इन से कर रहे हैं ये लोग। At the same time यहाँ पे KO का very good, very fast. See again, I think so executes are good. Crew executes are good. आ जाओ मेरे 40% गुड डेज के भी 1%। Yeah, which is why मैं रुक गया अलायंस का वो बोलते बोलते। Yeah, मतलब what is the point of participation in EMEA qualify for Gambit and FPX? What is the point मतलब? Exit full W classic और वो इको है ना? What is the point मतलब नहीं समझा मैं। Que ya está prácticamente condenada a favor de la Levianeta. Man, no problem. Yeah. Con Massino con Classic. Yo creo que se trata más alrededor de descontar, de intentar opacar un poco la economía. Circuit points. नहीं मतलब नहीं समझा मैं, क्या मतलब? They can't. Oh वैसे। हाँ तो they'll get circuit points, which will help them qualify for champions. You know. हाँ नहीं, they'll get circuit points which will help them qualify for champions. They can't play Lance right now, but आगे जाके तो खेल पाएंगे ना। De la escuadra ये CP point भी है सब। está en este mapa sí contra las cuerdas. 12-4 el marcador. Repito, si lo pierden no pasa nada, todavía tienen chance, pero tendrían que meter 2 mapas al hilo que hubo contra que vino a patear la mesa en lo que es Ascent. Se tranquiliza un poco la ronda. Can't epic play online and not LAN? No, Aditya. पैसा practice in the real match scenario. हाँ, see, Malav is correct. Tiene que ejecutar Crew. Y se va a abrir nomás Klaus con la Vandal. Recibe un poco de castigo, queda en coma. Detrás del humo termina de caer. Levanta la banda ya con intenciones probablemente de guardarlas. Va a quedar suprimido por el Cayo. Ay, 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 qué peligroso bailar adentro de ese humo. Massino que va a buscar una baja. Con el operator clavado, nada para hacer. Impecable. Ronda para Leviatan. 5-12 el marcador. Final, lo decía, era semieconómica, pero está bien manejada. Es una ronda Yeah, it's not only in the one British one. Hard to say. Parte de las apuestas, parte de lo que ya nos tiene acostumbrado, claro, en el sentido armamentístico. Voy a intentar comer, voy a intentar sorprender en el timing para llevarme alguno, para quizá obtener un arma, para quizá romper un poco la defensa y permitirle a mi equipo hacer algo más efectivo, algo diferente, algo que permita. Stream Valo तो stream कर रहा हूँ. Okay, I got 3 minutes to get to his Russian now. El plantado. Por desgracia aquí no salía. Vice hizo una buena ronda, terminó con 3 y después tacó definitiva, tacó línea. No permite que nadie se Don't really understand what Crew is trying to achieve here. Pasarela, si viene el avance, mucho cuidado. They're all over the place. ¡Uy, King! Dios. Una linda baja y otra para llevar, ¿no? Porque de rebote medio que encontraba la segunda ya corrigiendo su posición. Not banana. En movimiento. Y a través अरे deja la ronda 2 para 5. Una क्या ronda बात que है भाई. empieza emulando lo que hacía Naxet en Notes defensa. and everything. Colilla, quien se asoma con operator How did you de fix your PC? I formatted the Es Windows. realmente muy importante recibir una baja tan rápida, no solo a nivel táctico que Formatted the sino Windows. también a nivel FPX mental. Chinese और FPX में नहीं आएंगे, but if players from EMEA. Para el equipo atacante
y es clave que Taco, si quiere हाँ mantener उनका control मर्जी total del FPX mapa, का CS:GO siga roster was also a from ese ritmo, Europe siga only. sacándole el jugo al Operator. Roster change stream 2 para time. 5. Manoj Reddy, hi, welcome. Yeah, roster changes stream will happen at I think so 6 o'clock CS channel. Yeah, somewhere around that. Gastaron fuerte. La próxima ronda no va a estar en las mejores condiciones y poderse garantizar. Es lo bueno, ¿no? De saber que tienes ese número 2 en tu marcador, ¿no? Una buena ronda, sea económica, sea lo que sea, te garantiza Somewhere la around that victoria. time. Así que hay que forzar ese tipo de situaciones. Está bien equivocarse, te puedes dar el lujo, pero cazar, romper, Meltzer, puede man. haber sido algo excelente para Klaus con ese orbe. Meltzer no se lo permite. Ronda final. Yeah. CS:GO team तो कोई सेंस ही नहीं बनता. Why they have a EU team और ये सब. Like they took उनका heroic में इंटरेस्ट सेंस बनता था, but उसके बाद तो नहीं चौके. क्या बात है आदित्य. गम में डूब जाओ तुम. They also a Chinese team. Yes. Yes, Malav. They do, but they'll have to soon give it like because China अब जब include हो जाएगी, then they'll have to let go of one of them. अभी जब तक चाइना ऑफिशियली इंक्लूडेड नहीं है VCT के सर्किट में, तब तक इट्स ओके. उसके बाद they'll have to टाटा बाय बाय. Con esto es fundamental. Si I Leviatan mean, quiere volver en Ascent, see, es Leviatan group indudable up que está haciendo अच्छा है, but maravilla para su equipo. they aren't achieving anything Ser with el this, so parte they del need to change their ronda de approach. semicontra, en ronda casi económica. That was unlucky. Dentro de B, descuento. Angel कहाँ से है? 1, 2, 3. CIS. Paper X has a good Con chance. eso, Yes. impecable. Yes. Ronda rapidita. Y mira el marcador. Atenti, ojito. Pasó de algo completamente imposible a una pequeña chance, un pequeño sueño para la Levianeta. Leviatan pone en el chat, Cruz, si lees esto, déjame ganar este mapa. Okay. De compas, ¿no? Échame la I don't know how many people remember एक जब मैं छोटा था एक शो आता था, उसमें यूक्रेन को CIS ही बोलते थे. I don't know if people remember that. उसमें बहुत सारे अलग अलग वो रहते थे, अलग अलग तरीके के गेम्स प्लेज रहते थे. कहीं पे रेसिंग वाला रहता था, कहीं पे कुछ रहता था. अलग अलग कंट्रीज के बच्चे और वो सब उसमें पार्टिसिपेट करते थे. PRX full W full aim, no stats I guess. I've used Godspeed. Yeah, they are full W. They have a strong aim. But they have strats as well. Thoda bahut. I'm not say they're very strat based, but they have decent strats. Está muy bueno, oye, lo dices, Tacoliga está siendo muy importante. Y es que quitar así algo. Spelling भी यार नहीं यार, उसमें रेसिंग वाला भी था. मतलब कैसे समझाऊं मैं, वो गेम याद नहीं आ रहा मेरे को, वो शो याद नहीं आ रहा. बहुत मस्त था भाई वो शो. Comienzo de la ronda, un elemento cualquier. एक तो सीक्रेट्स ऑफ द हिडन टेम्पल, इफ यू गाइस रिमेंबर, वो देखता था मैं. सीक्रेट्स ऑफ द हिडन टेम्पल. और दूसरा ये Que sea, rompe las oportunidades. Si te llevas un दिखाओ भाई, Axel, सेटअप दिखाओ. Again, crew grouped up. See, again, I'm noticing a pattern. दोनों Leviathan and crew, they're very static. They're very fixed in the way they play. rompes al que va a entrar, al que se va a aventar directamente a la cara con el dash. Romper un Delsic. Yeah, they're dependent on. I wouldn't say so, Aditya. Te quita completamente los humos, no te lo puedes permitir. Pero en estos momentos la ejecución se Okay, viene K-Volt peligrosa. use किया, La nice. definitiva está activa. पूरा ये साइड क्लियर उनको पता चल गया. सिर्फ अंडर हेवन नहीं चेक किया और टेंस नहीं चेक किया. राइट. Lo va a ejecutar para. Mención good atrapado, from ¿eh? Jet. Qué bien, qué prolija esa Short baja, read. pero qué es rápido para el intercambio. Deja la ronda 4 para 4. Y ojo que la Spike K-Volt खत्म हो गया. अब todavía sigue KJ atrás, ¿eh? Killjoy atacante libera su definitiva, su contención. They are investing a lot in this. They want to end this in this round. Naxxed ya está infiltrado en el sitio y Vice que chequea los lurqueos posibles que se pueden dar. Recién ahora termina. पर में लोग मेहता क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा इज नॉट मेहता. मतलब क्या बात है तब.
क्या बात है, क्या बात है, क्या बोला है तुम? Al sitio y empieza la colocación del spike con un tacolilla que busca recuperar geografía de mapa por Heaven. Se escucha la punta colilla que busca recuperar geografía de mapa por Heaven. सोवा ने अल्ट भी इन्वेस्ट कर दिया, सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया है क्रू ने यहाँ पे। Y a ver cómo se da esta retoma, 4 para 4, cuchillo liberado de parte de Kesny, todas las stoppers posibles, ganando todo el tiempo que se pueda. Klaus sin Axel con un cruzado, pero Baix es más fuerte, encuentra la primera, adverso, hace lo propio, Kesny te intercambia, pero queda Masino solo. So you can see pairs में retake. Se toma 3 de vida, encuentra la baja, tras de la pared. क्या फेस कर लिया ये बंदा? Dardo revelador. But also somehow take see retake in pairs again. चार जन बाकी है तो 2-2 देख रहे थे नहीं? Cruzado, pero Baix es más fuerte, encuentra la primera, adverso, hace lo propio, Kesny te intercambia, pero cruzado, todas las stoppers posibles. इसका टैरेट देखो कहाँ लगा हुआ है कि कोई स्मोक से पुश करेगा या कुछ करेगा तो भी हमको दिखेगा। Todo el tiempo que se pueda. Klaus sin Axel con un cruzado, pero Baix es más fuerte, encuentra la primera, adverso, hace lo propio, Kesny. Atrás de la pared, mano a mano con adverso. Dardo revelador. Adverso corriendo con la Phantom, estaba en coma Masino. Encuentra la baja, desactivación y punto para Leviatan. ¿Qué tan mortales son estos chicos que a 3 de vida tienes el miedo de la vida, ¿no? Literalmente tienes el miedo de que cualquier cosa puede pasar. Una perfecta de bajas que comparte de crew, El robot que van a tardar un poco Again de group up. tiempo también en obtener. Close. Ay, Te qué la bien que sabía. hizo Klaus. Lo confunde con el robot y le explota el cerebro a Taco, que termina de recibir todo el castigo. King descuenta 1. Parece Very good rotation, very fast rotation. Alt का भी use करके Vice aparece en la ecuación, dejando la ronda rapidita. 3 para 2, ventaja para sorry Crew. alt का use नहीं मतलब Levantan armas. aggression का use करके ओमेन भी अभी इधर आ गया। It's a 2v3. Killjoy. Yeah, 2v3. देखो he has his flash as well. He has one shock dart. Masino has shock dart. Delzik has flash. यहाँ पे he has a flash पर KJ का कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. Very tough for Leviatan. No hay ninguna Let's see definitiva how de they hecho. Spike actually colocado do y it. todos Was metidos dentro del sitio. Shoulder pick top shot efectivo miss porque कराया. aprovechaba la posición de un Pick के पे जा रहा. A ver. Turret तोड़ दिया. सब चला गया El मतलब. retake, se viene la retoma. Crew. London Aún धीरे no धीरे आगे desarrolla बढ़ रहा mapa. है. Very well Para played. explotar. Oh, beautiful. Take, se viene la retoma. Crew. A 1 de cerrar el mapa. Flash to Para peek. explotar. Encuentran la primera. Down. 2v2 हो गया. No conecta. A 1 de cerrar el mapa. Van a explotar. ओमन को निकलना नहीं चाहिए था फ्लैश Encuentran la करके. primera. La paranoia no conecta. Still have a lot of time. स्पाइक उनके साइड में. ओमन को ये फाइट लेने नहीं निकलना चाहिए था डेल्सिक पे. Falsa información. Se maldaba Delsi. Why doesn't Riot provide this UI for local tournament organizers? Ask Riot, man. I also don't know. Confiado. Se mandaba Delsi confiado. यहाँ पे डेल्सिक ने गलती की है. पहला प्ले अच्छा था उनका. De cerrar el mapa. ये प्ले अच्छा है, ठीक है. Van a explotar. उसके बाद इसने ये काउंटर प्ले जो करने की कोशिश की, जरूरत नहीं है. इट्स स्टिल अ 2v2. तुम्हारे पास फ्लैश बाकी है, तुम बाद में भी उसको यूज में ले सकते हो जब वो लोग थोड़ा कूदने का आवाज आए, जैसे ऊपर से या कुछ, या इधर ही कोई डिफ्यूज का साउंड आए. मजीनो को ऑप लेके पकड़ के रखा ही है. मजीनो स्टिल हैज अ शॉक डार्ट. रिकॉन भी आ गया मजीनो के पास. डजंट मेक सेंस. हाँ Encuentra बिल्कुल la सही. primera, la paranoia no conecta. Falsa información. Se maldaba Delsi. चालू कर रहे क्या पापा? Se mandaba Delsi confiado. La paranoia le pasó por al lado. Lo peinó, pero no le pegó. नाइस थ्रो. हाँ ये क्रू ने 2v2 पे इनके जो डेल्सिक है उसने बहुत ज्यादा इम्पेशंस दिखाया. No lo puedo creer, era improbable. Era casi imposible. Primero, en ese ángulo, cerebro, Patience from Zhao or impatience from LATAM. pero él haber logrado un retake 3 contra 2. I don't know how many people know patience from Zhao. Patience from Zhao. Patience from Zhao. जो भी बोलता हो जैसे भी. It's a famous Dota phrase, man. It's a famous Dota 2 phrase. Patience from Zhao. Who's doing it? Toby won. क्या ही comment, क्या ही casting करता था. Sad that he turned out to be, you know, fucking जो भी abuser है, जो भी बोल लो. But Con operator incluida,
pixels a la comunicación, se meten a la cara. सामने के थोड़ा दिमाग रीसेट करो. They've already taken time out, I Por todos guess. los mantos oscuros para denegar ángulos importantes. They've already taken a time. La oportunidad a Vice de llevarse 2 vacas que le otorgan igualmente lo que es la retoma de este sitio. Sin embargo, esta es compra completa, se hizo desgaste. Again, moving in a Muchísimo force. la ronda, pero este es un Majority 12 a 3 जन 9. एक साथ. Hay que otorgar मिड ninguna पे स्मोक oportunidad है. y Naxxed ya sacó el operator. जे टॉप लेके ये मेरे को लग रहा है कि एपेक देख रहा हूँ कोई पेशेंस ही नहीं है. Tío, la बहुत paranoia de सिमिलैरिटी Delsi तो que no है conecta termina LATAM siendo और lo que ऐसे hace el में, juego पर de porque se manda confiado rompiendo para adelante. वही है. LATAM have always had more strats, I would say, but अभी तो not even strats, I'd say they have better understanding of the basics. LATAM बोल रहा हूँ, पूरा साउथ अमेरिका है, LATAM plus BR मिला के. Crew, ya a esta altura imagino They have a que better a understanding of basics. muchas rondas de ganar un Nice partido y no shot. lo pueden cerrar. La ronda de recién आके se वापस pueden meter en la they're now cabeza. permitting both sides कि भाई तुम मिड ले लो, ये ले लो, ले लो. Filtra. A ver, तुमको आना तो Naxxed, साइड पे si पड़ेगा. entiende el timing y limpia. ऑनिक फिलोसफी. Yo creo que sí. एक कोई बैंक में काम करने वाला अगर घर पे वाइफ अब्यूज करता है, उसके अगेंस्ट कंप्लेन क्या है, कुछ हो गया तो बैंक उसको नौकरी से निकालती है क्या? पता नहीं, डिपेंड्स ऑन द बैंक. ¡Oh! Pero aparece Delsi, que ahí está. El robot lo confundía. Loud team, the best team to come out of LATAM so far in Valorant. Loud. Definitely the best team to come out of LATAM. LATAM मतलब पूरा साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिकन सीन से बेस्ट Valorant team to ever come out of that region अभी तक. Rompe la matemática, rompe la ecuación. मैं जॉकविड हाय फकीर. El adverso espera el fondo sin salida. Hombre clave para Leviatan en esta ronda. A ver qué hace. 1, 2. Delsi. Rompe la matemática, rompe la ecuación y el adverso espera el fondo sin salida. Only one defender here. Clave para Leviatan en esta ronda. See, isolated fights. कितना easily he isolated fights. Y Melzer del otro lado del mapa. Matemática, rompe la ecuación y adverso espera el fondo sin salida. Hombre clave para Leviatan en esta ronda. I don't know. A ver qué hace. 1, 2. Sí. Y Melzer del otro lado del mapa. Justicia dejando a Naxxed solo contra 4. A ver, Naxxed. Una gran primera mitad. ¡Ay, Dios! Se le mandan de a todos. Nada para hacer. Y Kevo. No. Mira el marcador. No, manito. Explícame qué está No, pasando. जो भी इसको जो निकालते हैं क्या ना तो इसके निकालते तो हैं अभी तो मैं कंफर्म है रैंक भी देख रहा हूँ. 12 a 10 el marcador. याद है. Leviatan agarró mucho momento. No puede ser posible la forma de regresar. Y es lo que siempre estábamos. Dice y dice y dice. ¿Cómo vas a lograr el mental? ¿Qué tanto va a afectar para Leviatan? Estabas perdiendo. ¿Cuánto iban? Iban 12. मैपा एक्चुअल मतलब करंट मैप जो चल रहा है सीक्वेंटे मैपा शायद जो नेक्स्ट मैप आएगा स्पेनिश का 3. 11-1. 11-1 nos fuimos. 11-1 nos fuimos. Sí, sí, sí. A un 12 a 10. Una remontada tremenda. Cuidado con Axel. Tiene que comer directamente a la cara 13 de vida. वेरी गुड. ये फास्ट ई कंट्रोल उनको ग्लोबल की याद दिलाता हुआ जब ब्रीच के साथ कॉम्बिनेशन करके इसके रसी एम कंट्रोल ले रहा था अगेंस्ट फैंसी यूनाइटेड राइट. क्रू डूबा रही है लेकिन रैंक में मैंने से गंदे को देखे ये रैंक नहीं है. Hay que tener mucho cuidado. Más oscuro ha sido colocado. Y que termina por tolificar. सब डिसेबल्ड है. बहुत अच्छा डिफेंस Leviatan followed the Onyx playstyle, I guess, थोड़ा वो हद तक. जहाँ पे they focused more on side defense rather than defense outside, you know, in areas like mid और ये सब. They just let them be. उनका defense was more catered towards side और ये सब. बस एक दो राउंड I think so मार्केट में जब उनका इको आया था तब वो मार्केट के इधर रश किए थे तब यहाँ पे उनका के हमारा के वो सोवा मौजूद था. उसके अलावा they mostly fought या retook from like sides. Good from Leviatan. Estamos a uno de ओटी में टाइम आउट लेने चाहिए क्रू ने. हाँ प्रो सीन में कोई सेज क्यों नहीं खेलता? बहुत ही कम दिखती है सेज. खेलता तो है तो कम खेलते हैं आप क्योंकि सेज का अब उतना यूटिलिटी रहा नहीं. देयर आर अदर हीरोज दैट प्रोवाइड द सेम यूटिलिटी दैट सेज डज और उसका वो जो रिवाइव है बस वही बचा है अब. लोअर हीलो में हर मैच में सेज होती है. हाँ लोअर हीलो में तो सेज मिलेगी. compra completa. रैंक में सेज इज वेरी गुड. Increíble y
Y me vuelve a Sage, hypear, Reina, me vuelve a hypear. Chamber. Veníamos de dos mapas súper parejos y dije, Very "¿Por qué good. el These are very tercero good tiene que ser agents to así?". play Lo mencioné. in ranked. Hay mapas que a veces, por alguna razón, en este choque de estilos, se dan así, se dan muy orientados para una de las dos escuadras, y es lo que estamos Yeah, viendo. see, Timo. Es सही बोला increíble. 12-11 el marcador, venimos de un 11-1. वन में Leviatán, स्मोक आया háblame de वापस से chokear, इन्होंने चेक háblame किया de eso, quedó en el क्लियर pasado, है claramente, अग्रेसिव कोई नहीं आया यहाँ independiente de पे qué pase con el resultado de este डिफेंस mapa, वालों में से ya volver de tan चैट atrás es इंटरेस्टिंगली increíble, pero बहुत ही ojo, porque पैसिव Cruz tiene पकड़ una के रखी है más, बी पुश tiene को una chance más de cerrar el mapa y poner el segundo punto en esos डिफेंस rombos que vemos चाकू que फेंक के पता तो indicarían किया que कि queda प्लेयर्स a हैं una ईमेल में victoria किल्स तो लेते हैं सेज लेके बट फ्लैंक का जो बीटी होता है अरे de ser los campeones en la primera VCT LATAM. वो मार्क कर रहे हैं कि कहाँ हो सकते हैं वो Police लोग Operator esperando en previa de A. Kesnit junto a डाइस Klaus. मार्क किया है उन्होंने और टेंस मार्क किया है Actualmente डाइस और solo, टेंस मार्क किया है todos menos क्रू Naxet वालों en ने previa. अल्ट मार्क Con अल्ट कर रहे हैं रेड सेज इन रैंक क्या ही किट ऑफर करती है स्लो ओनली गुड वर्थ प्रीच एंड नहीं यार रैंक में सोलो खेलने के लिए सेज इज वेरी गुड यू कैन हील योरसेल्फ एंड तुम आप वॉल और वो सब से अपना खुद का प्लेस बना सकते हो स्लो से भी तुम एक कुछ एंगल्स को थोड़े देर के लिए कॉर्डन ऑफ कर सकते हो Que se viene de parte de Nicolás Ferrari. Será mejor que corran. Tacolilla advierte. किया Tiene un ángulo जेट हैज अ वेरी गुड complicado. पोजीशन दो Toda डिफेंस का जेट utilidad liberada. Se tiene que venir el embate, se avanza. Ah, he El misses. retiro no conecta. Furia del cazador también de parte de Massino al fondo a pescar. A ver, no termina de Todos en confirmar, no retake. convierte la baja, pero dos jugadores quedan contenidos. फ्लैश करके पीछे भाग गया नाइस फ्रॉम द स्केल Pasa de lleno a अब देखो रीटेक देखो 5 contra 5. I think here we'll see a 3-2 retake. Para la escuadra de Leviatán tienen su contención, atención. वो पीछे पहले चेक कर रहा है पीछे चेक कर लिया अब ये लोग साथ में जाके पहले ए शॉट कंट्रोल लेंगे Dar la jugada para Leviatán. Cruz tiene que defender con uñas y dientes. En esta posible última ronda. Ahora sí, la van a liberar. मारा Humo sobre Naxet. और रेड todo लगाया el miedo. Se viene nomás la Levianeta. अच्छा इस बार ये लोग ऊपर से जा रहे हैं इधर से आने वाले नाइस ए शॉट वाले को मारना बहुत इंपॉर्टेंट खेलता है वो Venía sorprender y Klaus queda contenido. सब डिटेन हो गए La Levianeta. Damn. Contra el mundo. A ver si puede remontar. Llega la Melzer 3K. चलो सेट द 60 लास्ट सेकंड में हुआ रैंक में चेंबर सिर्फ अल्ट एंड टीए के लिए खेलते हैं सब मैंने तो कल एक वो अंडा देखा चेंबर खेल रहा था और फर्स्ट टाइम चले भाई क्या हे भगवान क्या ही बोल सकते हैं रैंक में कोई चेंबर लोगों को बोल दो कि 2 ट्रैप लो और बाकी शेरिफ गोली लो 3 ज़्यादा गोली लेके कुछ नहीं होने वाला क्या बात They almost got the one. Vamos a trabajar horas extra. Y estas ya no son las caras que esperaba por parte de Cruz. No creo que tuvieran presupuestado tremenda remontada que acaban de meter. No, esto es increíble. Esto es increíble. Qué pedazo de final, amigo. Qué No, y esa Technical pause है Cruz después de 1 ya डुबा के भी सीरीज एटलीस्ट क्रू जीती हाँ भाई which is why I'm saying this is not a good representation for crew and the LATAM scene कि performances इतने ज़्यादा गंदे हो रहे हैं it's not just the scoreline but the way they are playing crew looked very one dimensional attack में अभी तक Un 12-2. their executes are good even though one dimensional their executes are good post plant बहुत ही horrible Se quieren llevar este mapa como de lugar, se quieren llevar su selección. Vamos a ver si lo consiguen. okay mid control finally एक चीज़ मैंने ये देखा दोनों side both the teams did not go for as active of mid presence जो जितना होना चाहिए Fíjate que hace la apuesta Operator pelado directamente. अलार्म बोर्ड तोड़ दिया मैं तो बोलता ही हूँ सब रीजन ही डूबो ऐसे और एपैक छोड़ के क्या बात है तने मैं वही करता हूँ पर टीम गंदी है हम ज़्यादा स्लॉट दो क्या Hizo बात la है diferencia en la defensa, ले लो ज़्यादा स्लॉट्स pero en esta ronda por ahora no के da tanta cara. Da सो cara हुआ por कोई el पता sector चल गया de कि A, इधर है donde वो nadie लोग está साइड की mirando तरफ de आ parte गए de la escuadra de Leviatán. Bueno, están mirando pero muy लेव नहीं है भाई que lentamente empieza a avanzar, Melzer अच्छा ये वो टाइम आ गया ना हाँ लेव है भाई फाइनली
Ojo con Leviatan, que quiere My meter un bad. comeback histórico en el mapa de Ascent. Quieren ser ellos quienes queden This is un good. mapa Mid con control seres लेके रख के रखे हैं, campeones y recon में spot नहीं हुआ. representantes número 1 de toda la región Very good. latinoamericana en el primer Master de Islandia. धीरे धीरे आगे बढ़ना चालू करेगा. La va a liberar y va a romper. Se reposiciona pero se esconde la escuadra de Leviatan. Nice. See, this is यही चीज उनको फायदा होना था पिछली बार भी. जो एक राउंड उन्होंने जीता था 3v2 वाला, वो भी इसी वजह से जीता था कि मिड पे लर्क हुआ था. इनको समझ में आ गया फाइनली. Atento con Klaus, lo toma en la espalda. Klaus está rodeado, pero tira el spike. 3 para 3, Delsi encuentra la baja. 2 para 3, ventaja para Leviatan. Y queda Delsi contra el mundo, suprimido, cantado y eliminado. Leviatan. तो लोग सिटीजन मार्केट देख रहे हैं. हाँ, De llevarse la sed. No puede, तने वो VLT चोक और जी का क्वालिफाई नहीं होना is a lesson for us to improve. सही बात है. no puede ser posible. Sí, Leviatan, very good. Posible, man. No They understood, I think so. जो टेक्निकल पॉज में वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, I think so they understood कि भाई हमको एक राउंड जो मिला था हमारे अटैक पे, वो तभी मिला था जब हम मिड पे लर्क कर रहे थे, मिड पे थोड़ा एक्टिव थे. हमको प्लीज वही puede करना. ser posible. Esto está. Es histórico, no sé, me atrevo a decirlo, no sé qué tipo de. Ni quiero decir nada. Díganos. उन्हें अच्छा टाइम आउट लिया है, मतलब अभी तो टाइम आउट चाहिए. Esperábamos What will crew go for on their attack? Esta es la escena. También tenemos en They're also going Latinoamérica for mid orgullosos control, del nivel de short estos smoke करके. muchachos, de las muchachas también, de la Game Changers. Increíble. Drone के पीछे porque पीछे se जा dio रहे un हैं. poco la región. Good. Puede que हाँ, sea la ऑफ का मेरे को última सेंस नहीं ronda समझ de में आया. Ascent. Si la gana But Leviatan that's en okay. defensa, se acaba el mapa que va. Yo no quiero saber, pero sí quiero saber qué va a pasar. Estoy Spot हो tenso, गया mid no पे, sé lo que smoke कर sucederá, दिया. pero estoy nervioso lo que le sigue. Y el rey avanza. Deus hace un poco de ruido y cuidadito que en el humo ya están comiendo. डोर भी Uy, तोड़ दिया. bien. ओके. El rey asoma tranquilo, no hace nada y quedaba detectado. Lo quería sacar. Spot भी हो गया. Solamente está el rey, cuidado en Axel. Quiere activar el tercer ojo, dispara, prueba. डैश suerte, no एक्सपेंड se कर दिया ve. वो फ्लैश ने. La डबल posición- माउस पे मिड पे. हाँ, हाय व्हाट. तो देखो, सिंपल सी बात है, पूरा यहाँ पे है और एक जन यहाँ पे बस ये पुश पकड़ के रखा है. ठीक है, ये टरेट पे पुश पकड़ के रखा है. दूसरी तरफ लेवायथन के पास कंट्रोल देखो, ए मिन का पूरा कंट्रोल है. ठीक है, बी मिन का पूरा कंट्रोल है बिकॉज टरेट इधर देख रहा है, कांटेक्ट नहीं हुआ अभी तक. जेट के पास इसका विजन है. मिड का इज द ओनली प्लेस जहाँ पे उनका विजन नहीं, पर उनको पता है प्लेयर्स है. तो लेवायथन ऑब्वियसली अंडर मैसिव, बहुत ही मैसिव एडवांटेज है. डबल मार्क पे मिड पे सोवर ड्रोन टैग विद फुल ज्योमेट्री, सो प्रिसाइज. बहुत बार ऐसा हो जाता है. Por parte de KRU, nos canta algo más lento, nos canta una búsqueda de bajas por parte de Naxxet. Quieren eliminar, pero para mí que Leviatan no se va a asomar, no tiene la obligación, no tiene la रोटेट करके बी की necesidad तरफ जा रहे हैं. बी de स्प्लिट ponerse en होने का लग peligro. रहा है उनको Solamente la चांसेस. zona central está descubierta. Será el कोई lugar, रोटेशन será el हुआ नहीं sitio है इसे, donde बट अब poco a धीरे poco धीरे ये la लोग escuadra पीछे de की तरफ KRU जा रहे querrá हैं. ओमन intentar TP यूज hacer करके el पीछे space, गया है. tomar cada una de las esquinas. Vice, cubierta. Será el lugar, será el sitio क्रू नॉट प्लेइंग एक्टिव. हाँ, donde poco a poco la escuadra de KRU querrá intentar. चाकू आया, स्मोक आया, अब ये तुरंत रोटेट करना चालू करना चाहिए इनको. और बी स्प्लिट है, देखते हैं. आई थिंक सो केजे का जो सेटअप है विच इज़ वेरी गुड फॉर बी मेन. जो लोग मतलब वेरी गुड फॉर, अगर ये लोग बी मेन अग्रेसिव खेल रहे होते ये सब जगह पे, ये सब जगह पे, पर नहीं खेल रहे. तो Tomar cada una de las esquinas. Vice se haga zapa al lado de su compañero. La rotación se está yendo para B. Cuidado con el rey. Viene con la flash preparada. El manto oscuro y la detección que es importante. Se queda desde 25 सेकंड्स रिमेनिंग. उनको बी मेन के आसपास का कंट्रोल मिल गया है. no se lleva a nadie y adverso al lado de su compañero. Podría Nice ser flash. desde la trinchera. So now they know कि Vice se haga zapa al lado de su compañero. La rotación se está yendo para now they know KO and Omen दोनों सीटी B. पे. Cuidado con हेलो नीजो और ट्रस्ट गेमिंग फैन. el rey. So Viene con la हमारे flash फैंस हैं. preparada. El manto oscuro y la detección que es importante. Se queda desde atrás. Prueba suerte. No se lleva a nadie y अब adverso इनको al पता lado है KO और ओमन दोनों सीटी पे, तो उनको मतलब पता होना चाहिए कि बी साइड पे केजे तो होनी ही चाहिए और दूसरा सोवा या जेट में से कोई होगा. दोनों भी हो सकते हैं. compañero podrían ser los guardianes perfectos desde la trinchera. King se queda. Cuidado, tranquilo, calmo. Se viene el avance, cuidado con Vice, encuentra una baja. वेरी गुड पैसिव सेटअप. और इनके कांटेक्ट पे अब देखो वो लोग पुश करेंगे. Segundo el plantado se está dando. ¿Qué
सीडी से हाँ किया ट्रेड कर लिया नाइस खत्म भाई 2 गेम प्लेसमेंट के टाइम रैंक में खेला मेरे साथ बट ऐड भी नहीं किया मुझे अरे अरे histórica dentro de Valorant Challengers. Leviatan pasó de un 11-1 a ganar la partida dentro de Ascent. 2-1 en el marcador general. 12-3 No lo puedo creer. वो भी मस्किनों ने वो जिताया नहीं तो 12 होता ही नहीं एक भी राउंड नहीं जीत पाते वो अटैक De un 11-1 a un 14-12 la Levianeta. So I'd say what to take away from this match is basically for crew attack one dimensional for Leviathan defensive control plus pressure अच्छा था compared to Leviathan उसका fast retakes और retakes का मतलब मैं बोल रहा हूँ प्लांट पोस्ट प्लांट प्री प्लांट दोनों प्री प्लांट पोस्ट प्लांट दोनों rehearsed retakes okay realized mid control is important mid presence is important in OT दे रहा है दुरुस्त है Parangan female lineup तो फाड़े ही जा रहे हैं game changes में yeah I expected them to qualify and they have and मेरा नाम क्या है बस प्रो लोग को किल दे के उनके फ्रेंड लिस्ट में जगह बनाना मेरा काम अच्छा क्या बात है भाई ठीक है तो इधर अटैक वन डायमेंशनल इसका भी अटैक आउट से वन डायमेंशनल पॉजिटिव गुड एग्जीक्यूट्स grouped up executes next game to M42 announcement when Godspeed to M42 announcement when do they have a different name for lineup since they have a male lineup as well hopefully they do man let's see Orangutan FE doesn't ring the same bell as maybe something else but let's see female and male yeah Orangutan orange can be male orangutan purple or magenta or something orangutan purple can be female you know velvet purple magenta I think those 3 colors can represent the female team and orange can represent the male team orangutan orange orangutan baboon कर दो एक कोई क्या बात है orangutan female and orangutan gaming I think orangutan orange is good I feel good orangutan orange and orangutan उधर magenta purple velvet कुछ भी कर दो मोजी चोमू भी मोजी पॉपी क्या बात है भाई क्या बात है साहिब और क्या देखने को मिला हमको दोनों के डिफेंसिव सेटअप्स बहुत ही सब ठीक ही हैं और क्या देखने को क्या बोल सकते हैं हम इनका बेसिक्स का अंडरस्टैंडिंग बेटर है अभी तो गॉडस्पीड कुछ अनाउंसमेंट करने हैं ओजी लड़की क्या बात है ओजी लौंडे ओजी क्या बात है वर्ल्ड रिव्यू खत्म हाँ खत्म हो गया ऑलमोस्ट और क्या नोटिस किया मैंने क्यों मैं जो समराइज कर सकता हूँ
वो लोग भी आप ही का स्ट्रीम देखेंगे, हारने के बाद काम धंधा तो होगा नहीं, ऐसे ही बैठ के स्ट्रीम देखेंगे। किन लोग की बात कर रहे हो प्योन? हमने तो कभी नहीं बोला वो हमारे स्ट्रीम देखेंगे। साइबॉर्ग जो लाइव स्ट्रीम्स होंगे उनका कर देंगे हम, पर अभी तो लाइव स्ट्रीम कुछ है नहीं। लाइव स्ट्रीम होगा तो कर देंगे हम। हमने तो ऐसा कभी नहीं बोला गुस्ताफ सन, नोबडी हैज सेड कि वो लोग हमारा ही स्ट्रीम देखेंगे बैठ के, पहली बात। दूसरी बात, आई डोंट नो। बेसिकली इतना समरी है, आई थिंक दिस इज गुड, दिस इज अ गुड समरी। अटैक वन डिमेंशन दोनों का ही था, इसके फास्ट रीटेक से रिहर्स्ड हो नहीं हो। और हमने लीक्स, अब और क्या लीक चाहिए? वर्ल्ड रिव्यू देखते होंगे लैटम वाले कौन से हैं, क्या देखेंगे फिर सीधा 100 यूएसडी का 100। क्या बात है तुम्हें? वही, अब लीक्स क्या ही बाकी रह गया, सबने बता तो दिया भाई, अब और क्या लीक्स? मेन लाइनअप के लीक्स, कोई लीक्स वीक्स नहीं है भाई। अरे गाइस, रोस्टर लीक्स तो हम सीए होने वाला तब के लिए एग्जैक्टली exactly. सारे लीक्स के क्वेश्चंस प्लीज 6 बजे के लिए रोक लो सीए के स्ट्रीम के लिए। आई गेस ये हमारा समरी हो गया। सारे ऑक्स के सारे प्रूफ्स अवेलेबल हैं, बस देखने आना चाहिए। सही बात। ओके गाइस, कमिंग टू द अनाउंसमेंट, छोटा सा अनाउंसमेंट है। शूटर एंड गोस्ट पता है। ओके, यस, लॉगिन करना पड़ेगा मेरे को वापस। Yes guys, so I am now coach on Metafy। ऐसा था, पासवर्ड पहले एंटर्ड है, इवेंट डालना पड़ा। So I'm now coach on Metafy, and as part of joining Metafy as a coach, I have like you can book sessions here. I'll show you my sessions. Wait a minute. Right, देखो तो ये रेट्स हैं फिलहाल के लिए, ये फिलहाल के लिए रेट्स है, कोई बात नहीं, तरह कर लो। तो ये रेट्स हैं, where you can get an individual summarized VOD review, which is a live replay reviews करना है तो problem review, where you highlight problems and I give you like solutions on the replay review, and a comprehensive review which is very normal, which is just the in-depth wala, but instead of live review you submit the VOD और फिर मैं उसका review करता हूँ। Team scrim sessions is where I set on the coach slot for the team for 2 maps, whether it is scrims official जो भी हो, if I'm allowed तुम्हारे लिए और उस समय के लिए, and then I help you live उस समय भी और उसके बाद भी जो हम वॉर्ड रिव्यू करेंगे उसमें। और टीम रिव्यू इज बेसिकली नॉर्मल छोटा 2 घंटे का सेशन वेर यू टेल मी योर प्रॉब्लम्स। टीम स्क्रीम सेशंस में आई फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स, टीम रिव्यू में यू टेल मी द प्रॉब्लम्स दैट आर प्लेइंग यू एंड we solve it. Preparing a full map is where basically I prepare a full map with defaults, execute strategies, philosophy, comp, everything for you. And so I have 3 codes to give guys. What I do is I'll post a tweet very soon. बंगाल के नॉर्थ में बेल्जियम में ये गाना ज़्यादा मिलता है, उसे कोच हो यार चोली भी बोलते हैं। डिस्काउंट कोड्स भी है।
पहला बात तो ₹1000 एक बार दे सकते हो. You can still take the $15 मतलब review. Basically, I've been helping so many teams बोल लो, players बोल लो. Should I try this meta thing? Not while you're contracted, मतलब. Not while you're contracted. मुझे टेसरैक्ट हो रहा क्या? 6 बजे बात करते हैं. लिंक भेज, कमेंट बनाता हूँ. Like I'm not contracted, which is why I can do this now. When you're contracted, you can't really, right? मतलब ओवर नहीं, मेरा भाई करेगा ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई. How active this platform? Platform is active. मतलब अच्छा एक्टिव है. Okay Abhishek. Hey, welcome to the stream though, Abhishek. So basically I have 3 codes to give away. So 3 players would receive 3 players would receive free sessions from me. Contract क्या होता है भाई, क्या बात. So 3 players can receive free sessions from me. I'll make a tweet about it. You have to just follow me and Metafy, and it'll be a giveaway, and hopefully you win the giveaway. If you win the giveaway, you use the code. अगले स्ट्रीम से टाइटल में Metafy डाल दे या कोचिंग करो क्या. नहीं जरूरत नहीं, मतलब विल सी, देखते हैं तने. तो I'll be giving away 3 giveaway codes, and all those 3 they can get any of these for free, any of these plans for free. And obviously you also have a refer a friend thing. You also have a refer a friend thing where you refer a friend, and जब वो पहला सेशन बुक करेंगे मेरे साथ मेटाफाई में, you will instantly get a $10 credit तने. तो वो भी है कि this is something I made because there was no structure to my sessions और वो सब जो मैं करता था. Now at least, because the main thing is not even this. The main thing is where is the plan setting? Availability. The main thing is the availability. This helps me streamline a lot of things. I can dictate कब मेरे को ये करना है या नहीं. कहते तो $100 वाला ले लो guys, 15 वाला फ्री में लिया तो तुम हो. हाँ $100 वाला भी जरूरी नहीं, 50-60 कुछ भी ले लो जो प्रॉब्लम्स तुम्हारी टीम के. जैसे तने फॉर एग्जांपल यू, अगर तुम जीते हो तो इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग अ मैप तुम 50 वाला जो है वो ले लो, 50 या 60 वाला, जहाँ पे तुम वो सब कर सकते हो, है ना. तुम जितने भी प्रॉब्लम्स थे टीम के ये सब के, तुम वो सब सॉल्व करा सकते हो मेरे से, है ना. इट्स जस्ट लाइक दैट गाइस. ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये टाइमिंग की वजह से मैंने ये किया है. नहीं तो क्या, मैं किसी को मना नहीं कर पाता था जो भी मेरे को बोलता था कि कर दो हेल्प. मतलब मैं जनरली मना नहीं करता हूँ. और रेट्स भी जैसे लोग मेरे से पूछते थे तो मैं कुछ बोल नहीं पाता था. इधर आई थिंक सो आई हैव मेड पूरा एक रेट चार्ट की तरह, एंड विच विल बी वेरी हेल्पफुल गोइंग फॉरवर्ड कि एटलीस्ट एक रेट्स डिज़ाइन तो हैं. और ऑब्वियसली अगर कोई ज़्यादा ये सब लेगा तो उसके अंदर यू हैव डिस्काउंट. जैसे now I don't know how can I show you, but if you let's say go to edit, if you take 5 you have 20% discount. So basically if you take 5 you only pay the price for 4 sessions. ऐसा करके कुछ है, which obviously helps you and me as well, because इससे मैं streamline कर पा रहा हूँ अपने availability और ये सब को. This is more important to me than any other thing. And hopefully आज मैं वो ट्वीट कर दूंगा. आज मैं वो ट्वीट करूँगा. प्लान रेट्स टाइम एफर्ट्स सेट है.
The highest one doesn't have to be the best. अपना need अलग है. Exactly. So which is why if you see the lesson settings, individual players के लिए these two are perfect. These two, right? Then ये जो तीन है, this is more for a team oriented setup. These are for teams. The individuals के लिए these two are good. I would say I'd recommend this over this because ये summarize what review में we just go through things. This is like a 30-minute session, not even a 1 hour session. But ये वाला पूरा in depth जैसे हम word review करते हैं एक individual का, I don't know, I haven't done any individual word review on stream यहाँ पे, पर ट्विच पे मैंने किया है. इफ यू कैन गो एंड सी, ट्विच पे मैंने इंडिविजुअल वाटर भी किया है पहले भी, एंड विल सी कि हम कितना इन डेप्थ जाते हैं उसके अंदर, उस प्लेयर का पर्सपेक्टिव और वो सब दिखाने के लिए. एंड ऑल्सो देर आर ट्रेनिंग, देयर इज दिस ट्रेनिंग प्लान एज वेल. There's this training plan as well. This is the 30-day challenge for Valorant, you know, where this is mainly focused on your improvement. Like there's guaranteed improvement within 30 days in this. There's a complete पूरा flow है जहाँ पे I'd show you the steps here. So introduction हमारा होगा, उसके बाद aim routine. I give you an aim routine जो fundamentals का aim routine है. Oh तेनु hi Dev. And then you have fundamentals of Valorant हम go through करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है. मैं बना दो explaining all of this. यार वही, हाँ मैं सोच रहा हूँ कि कैसे बनाऊँ. आई थिंक सो गिव अवे वाले में ही मैं नीचे थ्रेड बना दूंगा, वो बेटर रहेगा. रिव्यू 10 days आफ्टर, तो ये हमारा डे 1 पे होगा. डे 10 पे हम ये करेंगे, ठीक है, लाइव सेशन करेंगे कि तुमने कैसा, मतलब क्या हमने चेंज देखा है कि तुम जो डे 1 पे खेल रहे थे, डे 1 से अभी डे 10 पे तुमने एम रूटीन और फंडामेंटल्स को कितने अच्छे से इनकॉर्पोरेट किया अपने गेम में. और उसके बाद हम थोड़ा इन डेप्थ वो सब जानने की कोशिश करेंगे कि तुम क्या क्या और ठीक करना चाहिए सब. 20 days वाला, तो उसके बाद जो रिव्यू होगा अगेन दैट बी मोर एंड ऑफ एन इन डेप्थ, ज़्यादा जाएंगे हम, वेयर वी गो टुवर्ड्स यू नो व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग, यहाँ पे रिलेटिव टीम एफर्ट्स और वो सब के तरफ जाएंगे. नहीं गिव यू वाला कोड रीट्वीट करो थ्रेड की ट्वीट पे. नहीं आता मेरे को ये सब साइबर. और फिर फाइनल रिव्यू 1 महीने के बाद कि तुम्हारा फिर से इसमें एक रिव्यू भी रहेगा, और उसके बाद आई ऑल्सो हेल्प यू गो थ्रू जो बाकी चीज़ें हैं कि भाई ये करना है वो करना है एवरीथिंग. तो ऑल इन ऑल दिस विल गिव यू आई थिंक सो 6 hours of mine total, 6 to 7 hours of mine. झूठ नहीं है भाई, सही में करना नहीं आता मेरे को ये सब. This will give you 6 to 7 hours of mine, and Facebook आता है, हाँ Facebook थोड़ा बहुत आता है, ठीक है. 6 to 7 hours of mine, and this will also give you the aim routine जो तुम CA से मांग रहे थे, जो मैंने उसको दी थी. जो मैंने CA को aim routine दी थी, जिसके वजह से CA has improved. Aim routine basic है, but there is massive improvement in that if you know how to use it. और बस यही है, ये है हमारा मेटाफाई का, मैं यहाँ पे डाल दूंगा. मॉडल हो गया, क्या बात है, क्या बात है. ठीक है. And obviously you can refer friends when you take sessions. So when they book their first session, what do you think is better, aim drills after playing or before playing? Before playing every time. After playing कोई फायदा ही नहीं है. Aim drills are more for, you know, not for just improvement but more for warming up as well, and muscle memory as well. Like before going offline, to be more specific, I think before going offline you can do it just for making you yourself a creature of habit. मेरा डायमंड होने वाला था 7 लॉस स्ट्रीक, मोस्ट ब्रांडेड लोग हैं. क्या बात है तेरे. It's all right.
So this is the thing, guys. I'll see you on CA stream. Thank you for. क्या जगह पे पहुंच गया मैंने. Before playing, you'll do warm now. Aim practice becomes too exhaustive. No, so that is what I'm saying. I think I can incorporate both through my aim routine. I can incorporate both warm up and aim practice. तो हमारा करियर पूरा गेम क्या बात है. क्या जगह पे पहुंच गया. आंखें देखो भाई इनकी. तू भी ऐसा मुंह बना के स्ट्रीम एंड कर ले. अच्छा ट्राई करता हूँ बस. ऐसे ही ऐसे स्ट्रीम एंड करने का कोशिश करता हूँ. हो गया तो अच्छा है. बट यार करते हैं. Guys, I'll see you on CS stream. Thank you for watching the VOD review here. And I'll do another stream after the league stream tonight. मैंने कहीं तो सुना था एक स्टडी के बारे में. If you do aim prep before you stop playing, it is better to warm up than play in neutral than go offline. Obvious नहीं यूज करता. Right वाले जैसा. यार साइबर तो वही बोला ना कि क्रीचर ऑफ हैबिट बनाने, अपने आप को क्रीचर ऑफ हैबिट बनाने के लिए बिफोर गोइंग ऑफलाइन एम ड्रिल्स इज गुड. जस्ट ड्रिल्स इनटू यू दोज हैबिट्स, यू नो, दोज फंडामेंटल्स जो रहते. चलो इसी के साथ आई थिंक इसी की तरह मुंह बना के बंद करते हैं हम, है ना. डिस्प्ले कैप्चर बंद करके करता हूँ. अच्छा से आए. आज फ्री टाइम है क्या थोड़ा भैया? शायद होगा यार. बाय देन सी यू टुनाइट. यस आई विल. थैंक यू फॉर विजिटिंग गाइस. एवरीवन थैंक यू फॉर विजिटिंग. विल सी यू अगेन टुनाइट विथ आइदर अनदर वर्ड रिव्यू और कुछ तो हम करेंगे, ठीक है. बट विल सी यू अगेन टुनाइट. सी यू. पता नहीं कैसे कॉल कर देने. शायद अब लोग लीक्स लिखना बंद कर दे आज स्ट्रीम के बाद. हाँ भाई सही में 6 PM नहीं रहूँगा, वहाँ जाना है. कोई बात नहीं, मैं तो स्ट्रीम करूँगा 9-10 बजे. 6 बजे ये की स्ट्रीम है, फ़ोन से देख लेना. और नहीं तो मैं समरी दे दूँगा. मैं 9 या 10 बजे स्ट्रीम करूँगा. चलो गाइस, विद दिस थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू. मैं जाता हूँ थोड़ा रेस्ट करने अब. See you on CS stream, huh? Bye.